Fantastic experience for me. The very idea of eVidyaloka is attracted more people in India. So connecting to somebody very far out and something very different background, which you don't really normal schools around you. So that's what is fascinating personally. Do you need translation? Yes, please. That's a true sharing of. So ये कह रही है कि इनको eVidyaloka के साथ रहने से इतनी फायदा हुआ है, ऐसे बच्चों से कनेक्ट करना जो बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उससे बहुत अच्छा लगता है। So this platform लोग कहते हैं कि ये जो है जन्म से ही टीचर के लिए ऐसा इनका नेचर है, लेकिन इनको जो बच्चों के साथ अनोखी है। I want to talk a little about the students and the school. Basically, infrastructure, connectivity, technology is fantastic. There's a big TV inside the class, and for a teacher to reach out to very far out. It's really brilliant. But other than that, the school also, kind of supports the school teacher. There's a teacher who's present in the class and we teach. So it's kind of easy to get started with the school. तो ये जो सारा व्यवस्था है, टीवी लगा हुआ क्लासरूम में से विश्व के स्कूल में टीचर के बच्चों के साथ बात करने का पूरा व्यवस्था बहुत अच्छा है। And last 2 years, the interest that is being shown by the students was completely overwhelming. They are very much ready to learn more. पिछले 2 साल से जो इन्होंने महसूस किया है कि बच्चों की तरफ से पूरी कोशिश है, बच्चे बहुत चाहते हैं ये बिल्कुल बच्चे जो है सीखना चाहते हैं, ये बिल्कुल साफ है। These are things which make experiences really valuable. They are so I've said the important points which make me stay at eVidyaloka. I think I have to bring out some challenges as well. तो ये सब चीजों से ही इनको बहुत फायदा हुआ है और इनको चाह है पढ़ाने की, ये एंथुसियाज्म जो है इनको इच्छा है पढ़ाने की eVidyaloka के माध्यम से। अब जो है बताएंगे कि क्या क्या मुश्किलें सामना करना पड़ा। So as such, you're not directly connected with the students, which itself is a challenge. But that's the model. So we understand that that's the model we need to see. But when there is a failure in technology, which is very much real in our country, then the teacher can really struggle with that. So the continuity becomes a problem. So हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू ही बच्चों से बात करते हैं, और जब ये टेक्नोलॉजी कभी-कभी फेल हो जाता है, जो अक्सर हो सकता है हमारे देश में ऐसी चीजें बहुत मामूली हैं, तो ऐसे जब होता है तो बहुत मुश्किल पड़ जाती है, क्योंकि वो जो कंटिन्यूटी है, मैंने मतलब कल जो पढ़ाया 10
10 मिनट पहले जो बताता था या उसके साथ कनेक्ट करने का, फॉलो अप करने का कि अगला चीज जो आएगा वो छूट जाता है, वो मिस हो जाता है, वो मुश्किल है। That's a difficulty. The other thing is, I might also want to bring up one more, plus the whole setup, which is a manager, people who actually admin or whatever they call it here. So they have been a very good interface between the teachers and the school, and the education happening there. There are certain things which we have been constantly trying to do. There was a Skype conference call which was for us, which was fantastic initially, but that also couldn't sustain. So these are some points I would like to make. तो जो एडमिन लोग जो रखा है eVidyaloka ने, जो हमारी बीच में है, टीचर और स्कूल के बीच में जो है, जो सारा प्रबंध करते हैं, उनसे भी बहुत फायदा होता है। हमने स्काइप से कॉन्फ्रेंस कॉल भी ट्राई किया है, पर वो थोड़ी देर के लिए सफल रहा, फिर उसके बाद उसमें भी काफी मुश्किलें आई। तो ये सब हमारे मुश्किल हैं जो चुनौतियां हैं। Thank you so much, Meenakshi. इसके बाद let probably have you see. She has, I think, set a fantastic stage. You see here, she talks about why we should pursue, and then also talked about operational issues. कि how will it stay for longer, continue कैसे होगा. I think she has set that good stage. Gaurav, I hand it over to you for this session further forward. Actually, yeah. Thank you. Thank you, Venkat. मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? मुझे लगता नहीं है कि मुझे माइक की आवश्यकता है, बचपन से तो नहीं रही है। तो how many people are good with Hindi here? कितने लोगों को हिंदी समझ में आती है? और अंग्रेजी, how many people understand English better? उस क्राउड को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। Right, okay, so I'll request the panelists to try and mix Hindi and English as much as possible. यहाँ पर हमारे जो मित्र आए हैं, our friends have come from Bengal. झारखंड और कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र, महाराष्ट्र, they are our newest friends. Yes. अभी जुड़े हैं। Yes. Very nice. तो जो चर्चा रहेगी उसको हम दो भागों में बांटेंगे. We will divide the discussion into two parts. The first part we'll ask our panel members to share some thoughts. है वो ये है कि eVidyaloka और आप जो फील्ड में काम कर रहे हैं उसकी सस्टेनेबिलिटी कैसे बनाए रखते हैं? How do we maintain, how do we ensure sustainability of the work that all of us are doing on the field? So for the first 20-25 minutes, I would request the panel members, each of them maybe having about 3 to 4 minutes, to just share their thoughts. 3-4 मिनट में वो अपने विचार इस टॉपिक पर हमारे साथ शेयर करें और उसके बाद we'll open the discussion to question answer. आपके जो भी प्रश्न हो उसको लेकर we'll have a discussion around that, उस पर चर्चा करें और then end में we'll summarize the discussion and we'll close. कोशिश करेंगे कि इस सेशन और लंच के बीच बहुत ज्यादा फासला ना हो। लंच के पहले और लंच के बाद का सेशन बहुत मुश्किल है। लंच के पहले क्योंकि भूख लग रही होगी और लंच के बाद क्योंकि नींद आ रही और इधर-उधर के सेशन सब ठीक आ रहे। राइट, मैं सब थोड़े सोए लग रहे हैं कि जोर से पुकार हो जाए भारत माता की। Become controversial person.
quick introduction of, maybe start from this side and then move down. तो बहुत छोटा introduction करके मैं आगे hand over the mic. हमारे introduce yourself. Okay, I'll introduce myself. तो मेरा नाम गौरव है. मैं काफी बोरिंग सा इंसान हूँ. एक इंजीनियर MBA कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने अपना करियर शुरू किया. So I started my career in corporate sector. Worked there for about 6 years, and then last 7 years I've been working in the social sector. आप लोग मित्रों के साथ करीब 7 साल हो गए काम करते हुए. माइक्रोफाइनेंस, HIV, न्यूट्रिशन में काम किया है और अभी 4 साल से शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ हूँ. उसी ट्रेनिंग फाउंडेशन के साथ काफी काम किया और अभी अपनी एक संस्था शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं. जिस तरह बिजनेस कॉर्पोरेट्स के लिए MBA कॉलेजेस होते हैं, सबको पता है MBA क्या होता है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. इसको है इसको MBA इसने नहीं सुना है MBA. तो जिस तरह MBA कॉलेजेस होते हैं मैनेजमेंट डिग्री के लिए, जो लोग MBA पढ़कर कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम आप जैसे मित्रों के लिए एक डेवलपमेंट सेक्टर का MBA कॉलेज खोलें. तो उसे हमने एक नाम दिया है इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट. इसके बाद अगर कुछ जानना चाहेंगे तो आई कैन डेफिनेटली शेयर डिटेल्स फॉर ऑडियंस. We'll start. हमारे पहले पैनलिस्ट विनोद हैं. विनोद has over 12 years of experience in IT. He started his career with Cisco, and then after Cisco he volunteered with Youth for Seva, and now works with L&T Infotech. He is the senior officer of corporate sustainability and CSR. So I hand it over to you. Hello. Thanks for inviting me to this panel discussion. So, I would actually want others to speak and then go over volunteer, because I would like to speak more about the sustainability part of volunteer engagement. So, what will you just Okay. We can start with Ram. Okay. Maybe we'll do back and forth. We'll start with Ram. Then I go eat this. राम और मैं एक ही कॉलेज से आया हूँ. अगर मैं बोलूँ तो ये भी बोलूँ. Ram has 21 years of management consulting experience. उन्होंने देश और दुनिया भर की बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ बहुत बड़े-बड़े काम किए. Regional banks, financial institutions, retail, consumer goods, industrial manufacturing, trading and service industries. बहुत अलग-अलग इंडस्ट्रीज के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया. फिलहाल currently he is also trustee and board member at eVidyaloka. So warm welcome to Ram and Thank you. So after effect, it's like a hangover over me, after interesting session yesterday, so today we have a very different discussion. तो ये आज का सवाल हमारे सामने ये है कि ये how do we sustain, so how do we continue, जो we have actually started something, we need to continue the show things. और ऐसे नहीं कि आज शुरू किया कल खत्म किया, ये तो लंबी सफर है. We have to go through a long journey. So ये question really is from a organizational sustainability. So it's sustainability जो है, I don't know what's the Hindi word for it. निरंतर. Okay. So the important part is how do we continue the organization. इसमें for us to actually continue the organization, and I talk about it from we all are representing as partners. हमारा हर एक का एक सेक्शन है जिसपे आप काम कर रहे हैं. तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कंटिन्यू होगा तो हमारा काम जो है वो बंद हो जाएगा. तो we need to actually have a body to actually execute ourselves, right? So the body is important, and the body for us is the organization. So I've actually talked about sustainability from the 2 points I want to make from an organizational perspective. The first is clarity of vision. So it is very easy when you are in the social sector to get distracted. तो हमें हर कुछ चीज जो है
you actually look at it and you think that मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे मेरा काम होगा, यहाँ पे मेरा, I could actually help. You can't solve the world's hunger in a day, right? You can't हम हर कुछ चीज नहीं कर सकते. हमारा जो purpose होगा, clarity का vision जो है हमारा, so we all heard of Mahabharata and Arjuna actually focusing on God and उसका खाली आंखें उसको दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है. वैसे हमारा clarity of हमारा क्या करना चाहिए, इससे ज़्यादा हमको क्या नहीं करना चाहिए, उसका भी clarity होना चाहिए. So this is the first part of actually what I call as the important aspect of sustainability. The second part of it, and I will talk about it in the context of eVidyaloka. I joined the board along with Venkat. He also is from the same college that many of us, same again, also are from Milani. So when I joined in 2012, we were actually at that point in time having 6 centers in the country. And then 6 became 13, 13 became 27. This year we actually had touched 49, and hopefully by this new academic year, the idea is to actually touch 100. Right? Can we have a round of applause for it, please? And it's a very interesting journey, and we grow from stage to stage to stage. I actually always say that what brought you here does not take you there. जो आपको यहाँ तक ले आया है, वो आगे आपको, it is not the same vehicle that will take you आगे. जो वही वाहन आपको आगे नहीं बढ़ेगा. You may have to look for different ways and means of dealing with the situation. So, and the critical part of it is obviously the people. Critical part of it is about the way you are dealing with it, the way you are using infrastructure. So this vision of thinking big and actually using the infrastructure to move to the next level is critical. So from an organizational standpoint, I will summarize it in 2 points here, Gaurav. The first is you need to have very, very clear clarity or vision, what you want to do and what you are not going to do. So you can easily be keeping away. I could give you hundreds of examples. I don't have time now on what we have kept away from. हमें ये करेंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये नहीं करना है, खाली ये करने के. We actually are very focused on that. That's the first part. The second part is as we grow, we realize that we are not the same as what we were. So when I was 5 years old, I was wearing a very small shirt. I can't wear that shirt today. I have to look for a bigger size shirt. I have to look for what is appropriate for me today and for tomorrow, and not remain where we were. That's what I think is critical from a sustainability standpoint for organization. Thank you. We'll go ahead. Ram ke baad, I will invite our next speaker, Vijay. Vijay ka ek chota sa introduction. Vijay has served in 7 sectors, 8 institutions, and has multi-sectoral experience which includes rural banking, और ग्रामीण बैंक और कैनरा बैंक में काम किया है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में ट्रेनिंग में काम किया है, माइक्रो फाइनेंस में काम किया है, बेसिक्स में, लाइवलीहुड, नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट में काम किया है, शिक्षा में भी काम किया है, इस वर्क में अक्षरा फाउंडेशन, नसीम फाउंडेशन, and he's been a consultant as well. So I hand it over to Vijay for his work. ओके, मैं बोलता रहता हूँ मेरे दोस्तों को जो भी मेरे साथ काम करते हैं कि आई एम एन एथिस्ट हू डजंट बिलीव इन 3 things: God, government and sustainability. So the wrong man in this planet. Sure. But I strongly don't believe in sustainability because we are all evolving as human beings. The nature itself is evolving. So sustaining anything that's old, the nature will never accept it. So just forget the word sustainability because we are all evolving. We will grow. So that's my first. See, especially eVidyaloka is very difficult to sustain. But many things, it has many unique things, which is very difficult even to transfer to others. First of all, as Madam was saying, she brings passion to teaching, whereas in the school there is only profession to teach. Transferring a passion to a profession is very, very difficult. जैसे हमें बताते हैं कि हमारे जो eVidyaloka के टीचर्स हैं, वो पैशन लाते हैं सिखाने के लिए, और वहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, उसका तो वो उद्योग है, वो प्रोफेशन है. पैशन को प्रोफेशन में ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कर सकते हैं.
इसीलिए मेरा एक सुझाव ये है कि हर महीने एटलीस्ट एक बार हमारे जो टीचर्स हैं वो सब टीचर, स्कूल टीचर और हेडमास्टर को एड्रेस करें। दिस इज माय वन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। महीने में एक बार वो स्टूडेंट्स के क्लास को मत किया करें, वो वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ के जो हेडमास्टर्स हैं, उसके साथ कुछ बातचीत करें। वो टीचर नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप बातचीत करते हैं तो थोड़ा पैशन, आपका जो पैशन है वो अगर आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया काम है। दूसरा है आपको जो टेक्नोलॉजी है, आई डोंट थिंक, आई कैन नॉट सी इन माय लाइफ टाइम दिस टेक्नोलॉजी रिचींग द स्कूल्स। तो ये कोई सस्टेनेबिलिटी का बात नहीं है, क्योंकि जो भी आप इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी आप स्कूल को ला रहे हैं, समझिए वो स्कूल को खुद लाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 20 साल हमारे लाइफ टाइम में तो नहीं हो सकता। इसीलिए वो भी सस्टेनेबल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से हम वोकेशनल ट्रेनिंग में कंपेयर करते रहते हैं। एक गांव के बच्चे को हमने एम्प्लॉयमेंट का ट्रेनिंग देते हैं, उसको बेंगलुरु लेके आए। गांव में एक प्राइवेट फैमिली के बच्चे को समझिए, वो बेंगलुरु में आके बिग बाजार में काम करना शुरू कर देता है, वो 15 दिन में भाग के जाएगा, क्योंकि एक ही जन्म में वो 4 जनरेशन जंप कर रहा है। वो eVidyaloka का ट्रेनिंग और स्कूल ट्रेनिंग को 4 जनरेशन का डिफरेंस है। तो ये इतना जल्दी वो सस्टेनेबिलिटी या रेप्लिकेबिलिटी वो इतना नहीं होने वाला है। ये भी इसी हिसाब से भी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फंडिंग सस्टेनेबिलिटी हम कर सकते हैं। समझिए आपका जो लोकल एक्सपेंसेस है, जो मैनेजमेंट कॉस्ट के दो क्यों नहीं देते? अगर इसमें वैल्यू है, अगर ये लोग बच्चे समझते हैं कि इसमें बहुत बढ़िया वैल्यू है, अगर टीचर समझते हैं, स्कूल समझता है, एसडीएम समझता है, तो क्यों ना उसका कॉस्ट वो लोग हमको नहीं देंगे? तो इसके बारे में हम सबको सीरियसली ये करना चाहिए। आई थिंक इवन eVidyaloka शुड बी योर टारगेट दैट इफ यू आर सपोर्टिंग यू फॉर 5 सेंटर्स, जो सेंटर आपको खुद चलाना है। तो अगर आपने ऐसा टारगेट दिया तो ही हम काम करते हैं, नहीं तो हम नहीं काम करते। इसीलिए फंडिंग सस्टेनेबिलिटी मस्ट हैपन एंड वो हम सब कर सकते हैं। जैसे हमारा श्रीपति जी बोल रहे थे, हमारा धारवाड़ में जो काम करते हैं, कि गवर्नमेंट में बहुत ही और प्रोजेक्ट्स दे आर लाइंग आइडिया, कंप्यूटर्स आर लाइंग आइडिया, हाउ टू यूज देम एंड रन वन मोर सेंटर। ये हो सकता है, इसके बारे में हम सबको करना चाहिए। और हमारे धारवाड़ के यहाँ हमारे एमपी बोल रहे थे कि मैं फंडिंग करूंगा, तो हम बहुत खुशी से उसके पास गए। जो विलेज आजकल आपको मालूम है, हर एक गाँव को इम्प्रूव करना है, उसके गाँव में इंटरनेट नहीं है, तो बोला मेरे गाँव में इंटरनेट नहीं है, कैसे चलाए? तो ये भी मुश्किल है, लेकिन एमपी और एमएलए फंड से भी हम फंडिंग सस्टेनेबिलिटी कर सकते हैं। कई जगह एसडीएमसी मेंबर्स स्कूल टीचर जो पैसे दे रहे हैं, हमने सुना है, तो वो भी अच्छा है। तो इन माय ओपिनियन फंडिंग दिस वन इज पॉसिबल। आई वुड लाइक जस्ट टेक 2 मिनट्स टू कोट आवर ओन एग्जांपल। मैं हमारा एक जो संस्था है वो विद्या पोषक बोल के, जिसका मैं भी को-फाउंडर हूँ, और इस साल शायद ये प्रोग्राम विद्या पोषक चलाएगा। उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँ। जब हमने 15 साल पहले विद्या पोषक को शुरू किया, विद्या पोषक में हम 2 चीज़ करते हैं। एक, वी फाइनेंस, वी फंड वेरी पुअर बट वेरी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन। So every year we raise about 2 crore rupees to 2.5 crore rupees and fund students. अब दूसरा हमें ग्रेजुएट फिनिशिंग स्कूल चलाते हैं, जहाँ we take students for study in vernacular language and make them prepare them for the jobs. पहले हमने जब शुरू किया था, हमारा पूरा पैसा इन्फोसिस फाउंडेशन से आता था, और सुधा मूर्ति जी ने एक दिन हमको बताया, बहुत हो गया आपके साथ, अभी तुम खुद चलाओ। तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो एक फंडर से मिलियन फंडर्स हमने बताया, और कुछ भी नुकसान हमारा नहीं सोच सकता है कि कैसे हम रिटेल फंडिंग की तरफ हम ये करें। हमारे हुबली में गुराज देशपांडे बोलते हैं, उसने हमको ये सिखाया कि इंस्टेड ऑफ 1 person गिविंग यू मिलियन रुपीज, कैन मिलियन पीपल गिव यू 1 rupee. So we actually changed our perspective, that saying that whether you can really go there, from there we have. अब दूसरा हमने विद्या पोषक में है, जैसे यहाँ भी बहुत है eVidyaloka में कंप्लीटली वॉलंटियर सपोर्ट। अगर आपने हमारे टोटल तो 75% फ्री आता है, क्योंकि वो सब वॉलंटियर्स हैं, जैसे यहाँ के टीचर्स हैं। तो ए वॉलंटियरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे एमएन जी के बोल रहे थे कि वॉलंटियरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डोनर्स को फीडबैक देना। हमारे सब स्टूडेंट्स, हमारे सब बच्चे जिसको हम फंड करते हैं, वो साल में कम से कम 2 लेटर्स अपने डोनर को लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं
देखिए हमारे स्कूल में ऐसा एक टेस्ट हुआ, मैं फर्स्ट रही, नहीं तो हमारे एक स्कूल में कंपटीशन था एथलेटिक्स के बारे में, मैंने उसमें एक प्राइज जीता है। तो एक लाइफ एक्सपीरियंस जो बच्चे हैं वो शेयर करते हैं दोनों के साथ, होता है कि दे कैन एक्चुअली फील दैट देयर चाइल्ड who they are supporting and that child is sharing her experience with them। तो इसीलिए एक ऐसा ये जो रिलेशनशिप है इसको डोनर और जो फंड दे रहा है इसके बारे में सोचना चाहिए। eVidyaloka का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि आप स्टूडेंट्स के साथ काम करें। गौरव को शायद समझते हैं कि हमारे ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं जो स्टूडेंट के साथ नहीं काम करते हैं, वो देवर इंटरमीडिएट सब कई ऐसे लोग हैं जो एसडीएम को सुधारना चाहिए, कई ऐसे लोग जो टीचर्स को सुधारना चाहिए। जब तक वो लोग सुधार जाते हैं तब तक वो स्टूडेंट तो एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कि नहीं कोई मेजर नहीं किया है और सब हजारों करोड़ रुपए यहाँ पर बचा हुआ है, लेकिन आपका जो है आप स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट काम कर रहे हैं और आपको डायरेक्ट टुके लगेगा क्योंकि यू आर रियली हेल्पिंग अच्छा। जो अगर एक बच्चे के आंखों में कोई स्पार्क आ गया तो समझिए आपका जन्म सार्थक होगा। तो ऐसा काम आप कर रहे हैं, इसीलिए इट्स बी वेरी प्राउड दैट व्हाट यू आर डूइंग। अब मैं विद्याभूषण के बारे में बताऊंगा। हमारे एक दो तीन और चीज है जो मैं बताऊंगा कि आपका ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझना चाहिए। हाँ, विद्याभूषण क्या है? विद्याभूषण है वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने उसको पैसा दिया तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाए ये इमेज बढ़ाना बहुत जरूरत है। वो विद्यालय भी करता है लेकिन वो पब्लिक के डोबे ना। क्या आपको मालूम है कि जब शिबुला सीईओ ऑफ इन्फोसिस अपनी बेटी का शादी किया तो उसने कार्ड प्रिंट किया था, अगर आप मुझे कोई गिफ्ट ना दे आप पैसे मेरे स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशन हमारा दूसरा इंस्टीट्यूशन है रैपिड बोल के उसको दे दीजिए, उस वेडिंग कार्ड। तो वैसा लोग प्रिंट करना चाहिए। देखिए मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप इसको। तो ब्रांडिंग और एक दो सब मैंने जो तीन बताया अगर हमने किया तो फंडिंग सस्टेनेबिलिटी होता है, लेकिन आपका जो टेक्नोलॉजी और पैशन सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से इस जन्म में नहीं होता। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्पीकर। उनके पास मेरे पास बहुत इंट्रोडक्शन लिखा हुआ नहीं है, बट सर से अभी मुलाकात हुई है तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन। वेंकट रमन, he is a global business unit head as part of L&D, and we're very grateful sir to share some thoughts with us. Thank you. I'm very happy to be here. I'm sharing some of the experience, personal, in terms of sustainability, and also as a in terms of government. As a person, as an individual, sustaining what we do is very important. And I'm really happy that I've been recognized when I was here in the organization group. As you mentioned, there are a couple of people there. Abdul Kalam gave the award for National Award for Social Inclusion. Social inclusion, क्या सोचना organizations that the government probably put this to sign off the engineers for coming data. We divided professional engineering engineers. This is BCom, BA, BSc. We divided. उनकी कभी कोई सपना है अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, अच्छा काम करना है, कोई सपना है। इसलिए हमने वो टेक्नोलॉजी टूल्स यूज किया था और ऐसे इंजीनियर्स काम करते हैं वैसे सिंपल मेथड्स यूज करकर बीए बीएससी को पढ़ाई करती है, वो ग्रेजुएशन में वो भी वही काम कर सकते हैं और उसको ग्लोबल फाइनेंस का नाम से एक जॉइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में ओपन किया था। अब कब सोचना है काम करना है तो जरूरी नहीं है सोशल सेक्टर में काम करना है, कंपनी में भी 24 आवर्स काम कर सकता हूँ, बट वो पैशन है, वो पैशन है, काम करना है तो प्रोफेशनल काम भी कर सकते हैं और वो पैशन है, उस पैशन में ये भी कर सकते हैं। You also mentioned saying that passion is important.
personally, while that's the way we work, organization, I represent the unity, builder of the nation. This some different story उसमें very focused how we can help others. The CEO Sanjay Jawara, he had to get the world world about the launch school of sponsor इसको 50 शो कैसे करते हैं. First growth and sustainability. Sustainability कर सकते हैं पर on school, the school was sustain करने में मजा नहीं. India में 1.3 billion population है. तो sustain करने पहले growth के लिए growth करने का sustainability है. इसलिए पहले growth के लिए या funding चाहिए. शुरू करने में capex अब connectivity के लिए connectivity वो सब चाहिए capex और उसके बाद operation expense sustain करने के लिए वैसे हम भी plan करते हैं growth phase में capex and opex sustenance phase में और operational expense के लिए क्या करना है replacement के लिए क्या करना है वैसे करते हैं. और investment passion लेना है. Passion के लिए volunteers चाहिए, corporate volunteers चाहिए. The company needs some professional mind, career social mind. उनका कैसा टाइम निकाल सकते. School, remote classes, ये remote class पर campus में नहीं करना है. और अभी 36 volunteers हैं. और हफ्ते में 4 घंटा ये एक्सपैंड करने के ऊपर रिफ्रेश करते हैं, मीटिंग करते हैं और उनके लिए समय भी देते हैं करने के लिए. वैसे इसका पैशन है be motivated to ensure that they are able to get across. Finance, sustainable to passion. हम वैसे ही difference करना चाहते हैं. That's basically what I really want to start this community. Thank you, Mr. Ram. Move on to our next speaker. Next speaker is Abhishek. करीब 20 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं सोशल सेक्टर में. देखने में लगता नहीं है पर है. इन्होंने अपना करियर IBM के साथ शुरू किया. Started his career with IBM. He's actually served on the board of various non-profits and CSR committees, CII, BCIC, NASCOM. Recently, he won the award for his work in the area of lake and ward development, and he was given this award by the Honorable Law Minister, Shri Sadanand Gowda. Congratulations, Abhishek, and I hand this platform over to you. Thank you. You know, I would like to start on a very lighter note. Whenever I write a picture for eVidyaloka, I start that I'm not even a public speaker. You know, this is not the first time I'm doing it because I have a lot of volunteers in my office. They also start like this. This is something you start to teach them. I don't want the student to say that all the kids who are teaching, we are not a good public speaker. You want to make them a public speaker. Just a little bit. If I tell you how eVidyaloka is integrated with video technology, it's amazing. I think our journey starts pretty much at a similar time. We are sort of 3.5 years old, and the whole focus of our company is about how digital technology can help with it. The whole reason was our company itself is about digital technology. So what we do good as a company, what we do say in this case. Committed $1 million, which is like 1% of our revenue. 2% government mandate. 100,000, changing 100,000 lives by 2020, and all the 100,000 is going to be children, young boys.
We have completed 100,000 voluntary grants by 2020 again for children education. So these are the plans, and I'm very happy to say today our first global project. The various operations we have in the US and Europe. मैं आपको बता के बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था, जो ग्लोबल प्रोजेक्ट था, वो eVidyaloka का प्रोजेक्ट है, जो हमने ऑलरेडी पिछले साइकिल किया है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी मैं 1 महीने यूएस में था हमारा सेशन सेटअप करने के लिए। जो people who are new to America to listen English बोल सकते हैं, वो भी इससे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी चैलेंज है कि हम जो भी हमारे इंडियन लैंग्वेजेस हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। बट डेवलप के टाइम में जब हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे विद्यालयों के पास, जब आप देखेंगे कैसे अमेरिकन यूरोपियंस हमारे वोलेंटियर्स हमारी कंपनीज के वोलेंटियर वो पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को। That's a very good and very serious sustainable model. I will also like to thank eVidyaloka. उससे मैंने एक आइडिया चलाया है, मतलब चलाया नहीं मतलब सीखा है। जुलाई में हमें बहुत इनोवेटिव काम करने वाले हैं। ये इनोवेटिव काम क्या होगा? हमारे बच्चे को बैंगलोर स्कूल कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी। सो हमारे साइकोलॉजी में हमारे स्कूल है जो सपोर्ट करते हैं इन्वेस्टर और जो हम स्कूल बैंगलोर में सपोर्ट करते हैं। हमारे काफी सारे स्कूल हैं, सो मैं स्कूल में मतलब बैंगलोर में इन दोनों स्कूलों का कल्चरल एक्सचेंज होगा तो बच्चे 4-5 घंटे बातें करेंगे एक दूसरे से, जो बच्चे कभी मिल नहीं पाएंगे, कभी सोच नहीं सकते हैं, वैसा करने जा रहे हैं। और देखो कि लाइव डिबेट और देखो कि लाइव डिबेट वाला टॉपिक ये केवल तो eVidyaloka का कांसेप्ट है, तो आई दैट्स व्हाई आई वांट टू थैंक। और अब हमारे सारे एम्प्लॉइज ये लाइव डिबेट वॉच करेंगे। हमारे वॉलंटियर्स यूएस से यहाँ आ रहे बच्चों को ट्रेन करने के लिए, हमारे खुद के बच्चों को ट्रेन करने के लिए जो बैंगलोर से, ताकि एक कम्युनिकेशन बैरियर ना रहे जब वो इंग्लिश में बात करें। सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम। जहाँ तक सस्टेनेबिलिटी की बात है, जहाँ तक eVidyaloka की सस्टेनेबिलिटी की बात है, अगर आप देखेंगे सस्टेनेबिलिटी में क्या होता है, अगर आप ऐसे काम नहीं हम क्या करते हैं सस्टेनेबिलिटी में, तो देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट, जो शेयर वैल्यू की बात करते हैं। अगर eVidyaloka को देखिए, अगले कई साल तक, प्रॉब्ली 2500 और 100 साल तक, एटलीस्ट नेक्स्ट 50 इयर्स, आई डोंट थिंक हम इतने वास्ट हमारे इंडिया का पॉपुलेशन और हम उनको टैप कर पाएंगे। सो हमारे नीड्स तो रहेंगे ही रहेंगे। जहाँ तक की बात है कि हम कैसे उसको फाइनेंशियली मैनेज करें, कहाँ से फंडिंग करें, आई थिंक आप ऑलरेडी बहुत कुछ करते हैं। एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अगर आप 50 से 100 साल हुए, जैसे जैसे आप आई थिंक थोड़ा सा आपको पब्लिसिटी में, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा आपको आउटरीच करना पड़ेगा। आई थिंक वहाँ पे मैं नहीं देखता हूँ कि आप काफी सोशल है। I think that's the way it is. अगर ये मॉडल करें और ये सब चीज करें, क्योंकि आपको मॉडल करना चाहिए। हमें काफी कुछ इम्प्रूवमेंट के स्कोप से, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज पक्का होता है। जैसे मैंने बातें कही थी, अभी हमारे बैठक साहब और कई लोग सर्वरी साहब यहाँ पे, कई लोग से काफी बार घंटों हमारी चर्चा होती है। और जब हम बातें करते हैं कैसे हम जो क्लासेस दे रहे हैं उनको हम वीडियो दे रहे हैं, उनको हम एक ऐसा डिजिटल लाइब्रेरी बनाए कि कल के डेट में अगर कहीं पे टीचर्स नहीं है, वॉलंटियर्स नहीं है, या फिर इंटरनेट का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो कैसे उन वीडियोस को हम यूज करके, उनको यूज करके ऐसे सिचुएशंस का प्ले करना। कभी कुछ सहयोग हुआ कि टीचर वाज सपोज्ड टू बी, टीचर वाज सपोज्ड टू बी, तो ये चीज भी हमने प्रॉमिस किया है। अगर आप आगे आते हैं और करना चाहते हैं तो ना ही वीडियो को फंडेड एज ए कंपनी से फंडिंग नहीं करेंगे। हमारा जो टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज है, अगर मूवी याद बनाने की बात हुई, वेब एप्लीकेशन बनाने की बात हुई, वी विल आल्सो सपोर्ट दैट। सो वी वांट टू लाइक हम चाहते हैं कि eVidyaloka सस्टेन करे, बहुत दूर तक जाए, और इसके लिए जो भी जरूरतें हैं वी विल लाइक टू लीड, वी लाइक टू सपोर्ट दैट। बहुत बड़ा चीज है क्लाउड फंडिंग। अगर मैं छोटी सी बात बताता हूँ, हमारे एम्प्लॉय है बिल्कुल तो उनको
he both kidney failed and we were thinking कैसे fundraise करेंगे. There are a lot of crowdfunding sites. आप बड़ी and we also crowdfunding is also the same law applies for when you're looking for volunteer teachers. So I think that's the biggest thing which I think eVidyaloka can apply, and there we need social presence, social media. Why you are saying you are only to India? I would say go all out. They are in the US, Europe, so no bigger. We want to push China. All our employees can be all our employees to CSR program. We want to build these funds. Building these funds also. So हम लोग just आपकी करने जो भी लोग हैं, जो fortunately अपने काम नहीं कर रहे हैं, but they are very passionate to teach. और हमें इन्वॉल्विंग वैसे सभी लोग सारे कार्य कर रहे हैं. So if you can extend this, I think volunteering का कोई कमी नहीं होगी. Because बहुत टाइम होता है, अच्छा really want to do. Allah has given us this time. So there are few things I would like to say. और जैसे कि आपने बहुत सारे सुझाव और खाने की एक्टिविटी हैं. This is something I really personally admire. आज के डेट में देखोगे खाना के लिए जो कंटेंट जो उन्होंने डेवलप किया, चाहे कोई बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा हो, यूरोप में पढ़ रहा हो, चाहे हमारे झारखंड या बिहार में, बेंगलोर में, कहीं भी तमिलनाडु में पढ़ रहा हो, they all use the same content. They all use the same way कैसे how to learn maths with the fun learning. So हमें वैसा करना पड़ेगा. हमें इंटरेस्ट दिलाना पड़ेगा कि ऐसे चीजों को क्रिएट करें जो इंडियन इंडियन बच्चों की हो, उनके सोच विचारधारा के या उनके कैपेबिलिटी के अनुसार हो. इंग्लिश लर्निंग, अरे आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लर्निंग. अगर आप झारखंड से आके how important it is for English communication as such. So if you can do these things with a lot of this effort, I think eVidyaloka has to also move away a little bit from what they do in the great work to sustain that work. And with this last part, I want to appeal to them to move from content creation stage. And that will be a great game changer. So we will make it sustainable. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sheikh. We'll move on to our last speaker on the panel, Usha ji. Usha was ADP at Cognizant Technology Solutions. She's really very passionate about teaching. उनका volunteering spirit हमने करीब आधे घंटे पहले देख लिया था. And she immediately volunteered to translate. She's presently an English teacher at eVidyaloka in the Sheetal course center. So, over to you. Thank you, Gaurav. I'll start by saying I'm a good public speaker. Even if I say so myself. So, one thing we do have to be very careful about in sustainability of eVidyaloka's operations is the quality. So, as a teacher, I've been teaching for the last 3 terms now. I struggle with: are we making an impact? Are these children learning? I teach English, so it is very challenging. मुझे बहुत दुख होता है कि बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं. At the end of the session, साल के end में बच्चे इंग्लिश बोल पा रहे हैं और कई बच्चे बोल पाते हैं कुछ और कई बच्चे बिल्कुल नहीं बोल पाते. तो मैं सोचती हूँ मैंने कुछ पढ़ाया, कुछ सफल हुए कि नहीं. तो ये बात मुझे बहुत खटकती है कि कुछ हमने सफलता हासिल किया कि नहीं. बच्चे जो है क्लास जो है मिक्स्ड क्लास है. सपोजिटली वहाँ पे 30 चिल्ड्रन है, लेकिन मैं जो देखती हूँ बस 15 देखती हूँ. 15 से ज़्यादा मैं किसी भी दिन नहीं देखती. 20 ज़्यादा. और एक दिन जो बच्चे देखे अगले दिन वही बच्चे नहीं आते, कुछ और बच्चे आते हैं. तो कल जो मैंने सिखाया उसके ऊपर मैं बिल्ड नहीं कर सकती. आज का जो है नया क्लास है. तो अगर मैं एक लेसन पढ़ा रही हूँ तो कॉन्टिन्यूटी को छोड़ो, दोबारा मेरे को शुरू से करना पड़ेगा. तो मतलब काफी मुश्किल बात है कि बच्चे वही बच्चे नहीं हैं.
दूसरी बात यह है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, अब ये मेरे मन में आती है कि मेरे अलावा इंग्लिश उनको कोई और पढ़ा रहा है क्या, मतलब उनकी रेगुलर इंग्लिश क्लासेस चल रहे हैं क्या, मुझे मालूम नहीं। क्योंकि वो जो बच्चे हैं, थोड़ा सा भी पढ़ो तो उनसे कई बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। तो मैं सोचती हूँ कि इसके अलावा ये 6th क्लास में है, 5 क्लास इन्होंने किया है, इन्होंने कुछ सीखा नहीं सीखा क्या है, मतलब मुझे मालूम नहीं। जो मतलब जो कनेक्ट होता है, सामने सामने जो बच्चे रहते हैं तो उनके साथ बात करो तो पता चलता है उनका लेवल क्या है। ये इस माध्यम में बहुत मुश्किल है कि सब बच्चों का लेवल क्या है पता लगाना। ये हमारे लिए बहुत इसमें बताया चुनौती है, राइट। सो दूसरी बात यह है जो हम जो पढ़ा रहे हैं हम तो स्क्रीन में दिखा रहे हैं। आप समझ लीजिए यहाँ पे बैठे हैं, स्क्रीन पे दिखाया कुछ और दूसरी भाषा है जो आप नहीं समझते। एक स्क्रीन आता है, हार्डली 2 मिनट्स 3 मिनट्स है, वो चला जाता है, दूसरा स्क्रीन आता है। तो बच्चा कितना सीखेगा, कितना उसको पढ़ने की कोशिश करके, उसको समझने की कोशिश करके, बहुत मुश्किल बात है। मैं चाहती हूँ कि उनके हाथ में हो, मतलब जो मैं स्क्रीन में दिखाऊं वो उनके हाथ में एक प्रिंटेड पेपर में हो। अगर वो प्रिंटेड पेपर में है तो वो ये बजाय कि वो स्क्रीन में देखे बजाय वो यहाँ देखेगा, अच्छा ये स्क्रीन है तो ये पेज है। हाँ, तो विजुअल रीइंफोर्समेंट, आई वांट दैट कि हाथ में हो जो मैं स्क्रीन में दिखाऊं। एक ही स्क्रीन है बच्चे के लिए, 20 बच्चों के लिए एक ही स्क्रीन है, पर हाथ में उनके पास इंडिविजुअल हैंड आउट। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये चेंज करें। इससे हमारा जो सिखाने का जो सफलता होगा काफी बढ़ेगा। Whatever we teach, we should have it in hand. If we show them some exercises, कोई fill in the blanks दिखा रहे हैं, कोई क्वेश्चन दिखा रहे हैं, उनके हाथ में हो, तो इसका मतलब है कि हमें बहुत कुछ प्लान करना चाहिए। हमें पहले ही साल में क्या क्या सिखाने वाले हैं सब प्लान करके उसका प्रिंट करके इसको भेजो। मैंने पिछली बार ये कोशिश की कि मैंने जो सिखाना था, मैंने उसके जो की पेजेस थे मैंने सब नहीं भेजा, पर हर एक चैप्टर का 2 और 3 पेजेस दैट वर वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मैंने प्रिंट करके उनको भेजा। और बच्चों ने वो पूरी 3 महीने रखा और बच्चे लेके आए स्कूल को और उसको दे वर एबल टू रेफर टू इट। मुझे लगा कि उससे इनको फायदा हुआ। अगली बात यह है कि रिटन वर्क कुछ नहीं करा, मैं तो नहीं कर पाती हूँ, आई डोंट नो व्हाट अदर टीचर्स डू। तो मेरा ये पर्सनल फेलियर है कि मैं उनको रिटन वर्क क्या दूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मैं उनको रिटन वर्क दूँ। मैं तो चाहती हूँ कि हर एक का रिटन वर्क मैं देखूँ, नहीं हो सकता। इंग्लिश के रिटन वर्क में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग है, पंक्चुएशन है, कैपिटलाइजेशन है, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं किस किस का रिटन वर्क देखूँ, नहीं देख पाती। मैं अगर रिटन वर्क देती भी हूँ, करते हैं या नहीं उसको चेक नहीं कर पाते हैं। कितने लोग करते हैं और ठीक करते हैं कि गलत करते हैं, मुझे मालूम है। तो रिटन, विदाउट दैट रिटन रीइंफोर्समेंट हमारा पढ़ाना जो है सफल है कि नहीं मुझे मालूम है। ये मुझे रात को सताती है, मुझे नींद में आता है कि बच्चों ने सीखा कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। ठीक है, तो इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाती मैं। मुझे मालूम है कि बच्चे 15 बच्चों में से 2 या 3 बहुत स्मार्ट हैं और हमेशा वही उत्तर देते हैं, वही हाथ उठाते हैं। अगर मैं उनके हाथ को इग्नोर करूं और वीक वाले बच्चे से पूछूं तो वीक वाला बच्चा तो they are not able to say anything, तो बस मुंह बंद है, वो शर्माते हैं, वो समझते हैं कि उनकी बेइज्जती हो रही है। मैं नहीं चाहती कि वो ऐसा समझे, तो इसीलिए मैं वीक वाले बच्चों को चुन के बुला नहीं सकती आगे, क्योंकि फिर वो समझेंगे कि उन पे अच्छा नहीं हो रहा है ना। तो आई डोंट वांट देम टू नॉट लाइक द इंग्लिश क्लास। सो बार-बार मैं अगर स्ट्रॉन्ग बच्चे से पूछूं तो क्या फायदा, और स्ट्रॉन्ग बच्चे जो आंसर बताते हैं वो मैं वीक बच्चों को बताना चाहती हूँ कि ये है राइट आंसर, अब ये सीखो। तो इंडिविजुअल अटेंशन बड़ा मुश्किल है। जो 15 जो बच्चे आए हैं उनको जो मैंने सिखाया आज, वो सबसे जो वीक बच्चा है उसने भी सीखा कि नहीं मुझे मालूम नहीं।
सेम थिंग, कल जो मैंने सिखाया आज वही बच्चे नहीं हैं। लाइक किसी ने, मीनाक्षी जी ने बोला कि लाइट चली जाती है, मैं चाह रही थी कि एक जैसे वो रीड अलाउड बुक्स जो हम कराते हैं, रीड अलाउड बुक्स प्रथम में बहुत अच्छे बुक्स दिए हैं, तो उसमें बहुत अच्छे पिक्चर्स हैं, बहुत कम शब्द बच्चे पढ़ पाते हैं, पर एंड में जो पंच लाइन है, एंड में जो मजा है बुक का, जो एंड है उसका, वो कर नहीं पाती क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है, वो कनेक्शन चला जाता है। इट ब्रेक्स माई हार्ट। फिर अगले दिन should I waste the whole class trying to get back to that? No, I have other things to do. So that technology thing really kills you. But I must say it has been much better this year. This term, connectivity has been much better. So we have to thank our stars and whatever technology provider we have. Technology has been very much better. So as far as sustainability goes, I want to make sure that the children that I have taught actually learn something. And I think that is the most important criteria. Funding hai, volunteers hai, everything. But unless we've made an impact on the children, there is no point, right? So I would like to see that we actually have made the change. So one thing I would like to suggest is at the end of the season, at the end of the term, I would like a conversation between the teachers and the admin people to say, how did my students fare? I looked at my results. Some of them got 3 out of 30. Some of them got 10 out of 30. But the structure of the way in which I see the reports is very convoluted, such that I have to click on 30 students in order to find the 30 marks. So I wasn't very happy. So I need to see a summation of it, some statistics, and see how well I did and how badly I did. Right? I need to know that. So I'd like to get some help from eVidyaloka in telling the teacher how unsuccessful or successful I was, whether the changes I made this year, were they, did they contribute to, any improvement. So I'd like to see that. I would like to send my lessons ahead of time. But then, I thought about it and I said, what lessons am I going to create? I'm going to create some comprehension piece, then ask some questions on it and ask some grammar pieces on it. Then I said, wait a minute, the textbook already has this. Right? Why am I reinventing the wheel? I don't need to do that. So, should we ask the teachers? So, Mr. Vijay said a very important thing. Why don't I have a conversation with the school teachers and find out what they are doing? They can find out from me what I am doing so that we can be more in sync. So, if they are doing chapter 1 to 4 in this month, I can also pick up those same textbooks, chapter 1 to 4. They may have done it, but I'm sure that I can add more depth to it. I'm sure that I can help the children in comprehending that text, in comprehending maybe the nuances of the grammar, in re-emphasizing whatever text they covered in the regular classes, if they have regular classes. So maybe, So, in those schools where they do have regular classes, maybe we can supplement what the teacher is doing in order to provide a better result. In those schools where they don't have regular classes, then I want us to send some written things to them. So even, let's take maths. If they're going to give you a set of sums to do, let's send that ahead of time. Let the teacher say, open up this page, these 6 sums, now do this. Yeah. So I would like to do these things to make us more sustainable and make actual results. And I would like to have more coordination between us and the partners that we work with, all of you, right? Last time I was able to send my lessons to a partner in Jharkhand, in Giridih. Great. And they were passed along to the children, so thank you. That really made a difference and that helped us a lot. And I'd like us to work together with the teachers of the school as well, to see what they are covering. Maybe I could cover something along with that. So more power to all of us, and I really want to see some impact at the end. Thanks.
Thank you very much, sir. Actually, now our last speaker. तो पहले से हमें भूल ही गया था हमारे बगल में बैठे हुए. So our last speaker Vinod, and hand over to you, and then we'll open this discussion for question and answer. Great. So, I don't want to use the mic. So today we are going to fund for the prize. What are the that we are number of 5 schools for eVidyaloka, and what are we going to fund for the 4 number of schools? It's all because of our volunteers. So I should actually thank everyone for being patient for 1 year, because this proposal of eVidyaloka came to us 2 years back. Wherein 1 full year we wanted to engage our volunteers and see how the program is sustained. So because the goal of this concept of eVidyaloka online teaching is dependent on the volunteers. So we wanted to see how the acceptances are from the corporate volunteers, and then take to the management saying that we are doing this kind of such a wonderful initiative, and we want to funding from them. So after the year 1, from last year, we funded for 5 schools, and we could see the platform that we also use similar to Skype. So wherever eVidyaloka schools are being doing, we have introduced a new software called Qualcomm through which we were able to connect to multiple schools. So in fact, we also had one of the inauguration that when all the 5 schools were connected at a single instance, without even having a little bit of latency or without having any technical issues. We were able to connect to one full hour. Only two different that was Ram and I think that was there for the inauguration. So that is why after saying all the things, CEO and management, he instantly said, yes, please increase it to 50 to 100 schools this year. So that's how we got the approval for the owner of schools. Again, in terms of the volunteer experience, we encourage the volunteers as well as the spouses of the volunteers to be part of the program. So in fact, few of our volunteers whom I would like to meet, like Krishna or Dr. who are still not there in Egypt or in LND, where they have moved to a different job. They are still volunteering with eVidyaloka. So this is why I can bring the system as part of the volunteers. So apart from this, we also I have discussed with David, like using the same platform to school, whether we connect some online quizzes or something like how to function with the. So we also want to do some kind of quiz program, maybe more interactive, and yeah, my role is here. All these days I used to coordinate all the eVidyaloka program. Now that we have introduced something called infinite cause, where an infinite employee becomes a project manager for the CSR project. So he can drive, he can interact with the students and be the liaison part from the company rather than so that we focus more in terms of from the management perspective how we can involve or get more of our students. So this is where the volunteer takes the role of a project manager. And apart from that, I was just back before discussing with Rishi in terms of the content development. So the volunteers also feel that he gets promoted. So now I'm teaching, now I'm just going to the next level. So we promote the volunteer in the activity to be part of the development. So I think so most of the other points the panelists have spoken. So these are the things that I want to share. Thank you. I think we forgot a very important point. One point Ankit volunteered and teacher volunteered continuous to Ankit. She opposed when she told about 8 months back. She करना चाहिए इनके साथ कंप्यूटर लाइट उसके साथ प्लस ये सारे only 9 months old. We haven't been first year of completion. So we're looking at very similar. और आप वही क्यों करोगे एक volunteer से she has got 50 volunteers from videos. Within 2 months of time. So I think that is sustainable. एक volunteer आपके teacher आपके amongst you can do so much over there. And we also committed this year to support 6 schools, which will be first step from our side. Thank you once again. Thank you everyone. बहुत अच्छा सेशन रहा. We got some wonderful points ranging from the importance of learning, the importance of diversity in funding, to the importance of maintaining the volunteer base and actually increasing the volunteer base over time. Many different points have come up in these discussions.
to Mr. Vijay's point, we need to look at sustainability differently. हम जिस तरह इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, शायद उस व्यू पॉइंट को ही बदलने की आवश्यकता है. So I now throw the discussion open for any comments. आप लोग के मन में कुछ है जो आप शेयर करना चाहते हैं, या कोई क्वेश्चन है जो आप पैनल से पूछना चाहते हैं. I leave that, the door open. As we start today, I just translate the key 5 points in covered for the interest of that table. Because I think Indian English trend. So if our basically so knowledge point, reaction Veena, especially Vijay sir, funding sustain but model has to evolve. So that has to change constantly. Our version of sustainability, when the financing part will come in, you look at various sources, but our model of people change, right? And then the way of individuals has to change. That is one key point that came out from it. Rendavathu funding வந்து முதல்ல வந்து maybe சில corporates பெரிய donations கொடுப்பாங்க, but can we have small amounts of donations by people, right? Community involvement with the financial sustainability. Second point, corporate side is value or especially sustainability ஏதாவது பண்ணணும், right? First grow பண்ணலாம், right? Take to a particular growth level. அதுக்கப்புறம் work sustaining it, right? That's the key point at least came to my hand, right? Another point came from the corporate to involve as many people planning process. ஒரு business grow பண்றதுக்கு you need authority. அதே மாதிரி social point வந்து grow பண்றதுக்கு உங்களுக்கு people involve பண்ணணும். There has to be a planning and then there has to be resources. Last fourth key point which came from our teacher practice, okay, is the child learning, right? I think key point, but until that child is learning, I probably use this opportunity to kind of tell that kind of challenging point which is big. I share the same on eVidyaloka shoes. Personally, that is sustainability, right? Somebody who is just spending a few hours or making sleepless on the battery, which means I have more horsepower to solve this problem, right? Thank you for open up here from people. Based on this speaking, I will bring some more questions. Any thoughts, any questions? Hello, sir. I'd like to say that the motto of eVidyaloka is to educate anywhere at any time. And to make it a success, we need to be more mobile. So we need to make some equipment and like mobile health unit so that learning unit, so that we can move here and there and check whether the progress is going on. So that if you are concerned with, you can just sometimes just take the fan and go to your classes and check whether the progress is going on. You take the class from that fan and after the class you come to the class and check by yourself whether the students are learning or not. I think that will be a better idea to make it sustainable. And one more thing, I have once saw a TED talk by Mr. Sasipalu, and he said that to make any system sustainable, you have to focus on 4 E's, that is expansion, equitability, excellence, and employability. So we are just omitting the employability. We need to focus on the first 3 E's, that is expansion, equitability, or equality. Just remember, and third is excellence. So we need to ensure all the 3 E's in order to make it a sustainable program. Thank you. Interesting. We already are in eVidyaloka. I would like to add a moderation to so the next step is starting something called classroom on wheels. So there is just a buying concept from this year, where they have something called science only on wheels. So we were just kind of trying to see wherever we can have some kind of after school program so that a lot of other children
getting, you cannot onboard them to regular school. So we have something called plan called Classroom on Wheels, which again is going to be through digital literacy. So, yeah, so I'll discuss that. So just adding to that, guarantee and video was in the same set of NGOs. So we also work mostly with STM Foundation, and we have something called iMobile app. And what we're trying to do with that is this mobile app is going to tap into 15 government schools, right from Amargata to Kerala, and they're going to teach science experiments, which is anyway the Western's forte. And what we have added is that we have given them laptops and digital devices like tablets and other things. And they will be both science as well as digital sessions. And that's a 15 school level government iMobile app. So I just want to share that. So I think that mobile thing that you talked about is very powerful. One of the things you read about in Matthew Gable's Outliers is that the thing you learn in class, that is not the most differentiating factor they found in the US schools, but it is what the kids learned in the 3 months of summer vacation. That is what determined why the most better schools, the children did better than say the government schools or the poorer schools. And this is one thing we could think about. So, what he talked about having a mobile van. So, the mobile van could actually do extracurricular type of activities, which the rural kids do not have access to. And if they can go through, I don't know how this would be possible, but go through our schools, make a thing through our schools, and actually give them those kinds of experiences, which they wouldn't have access to otherwise. I mean, that could be a bit of it's a spark that some child will be able to give a spark that will, boost them throughout their lives. Just there are 2 points. One foundation. मुझे 100% विश्वास है कि काम और क्वालिटी जहाँ दिखती है जहाँ मिलता है वो सस्टेन होता है आगे बढ़कर और जिस तरह से eVidyaloka स्टार्ट कर रहे हैं इस टाइम को ले जा रहे हैं हम आगे बढ़ने के हमारा गाइड सिस्टम को पर एक सवाल है कि हम इसको किस तरह से एडवर्टाइज कर सकते हैं किस जगह को हम कर सकते हैं इस मंच को हम कर सकते हैं अभी हमारा कार्यक्रम में हर स्कूल में टैबलेट को नाम ये टेक्नोलॉजी इसी क्षेत्र में हम कर रहे हैं हमारा जो कार्यक्रम है वो 12 से में चल रहा है उसको दिखाने के लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आगे बढ़ाया और वो आगे आकर के तेजी से कस्तूरबा गांधी विद्यालय से वहाँ 4 सेंटर फॉर्म है कि आज इसको लगाइए हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सपोर्ट करते हैं तो एक सर्टिफिकेट का काम होता है तो इस तरह से थोड़ा जो चीजें आ रही हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं और आगे कैसे कर सकते हैं बेहतर अपनी चीजों को बता सकते हैं ये देखो प्रश्न आता है हम लोगों के लिए कि हम तो छोटा ग्रासरूट का ऑर्गेनाइजेशन हम काम कर सकते हैं और हम अच्छा काम करके दिखाते हैं हमने अभी हमारी डिटेल बोले कि जो मैनुअल काम जो हम कर रहे हैं खास करके 60 स्कूल 4680 स्टूडेंट को हमने क्वालिटी एजुकेशन वो झारखंड सरकार उसको देखा हम बिल्कुल जो बेहतर है उसको फॉलो किया सरकार ने पूरा स्टेट में फॉलो किया आज सब डिफेक्ट हिस्सा का एक हमारा कार्यक्रम शुरू किया कि उसको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग करने तो हमारा ये पॉलिसी किस तरह से जाए कि हमारे चीजों को सरकार फॉलो करे और उधर से ये बात हमारा सिस्टम बनता ये हमारा The question is, how do we get to divide consent in education? Our friend here actually said that he's confident that the work we're doing at eVidyaloka will be sustainable because we're doing good work on the ground. And the concept is good, there is outcomes happening. But how do we now take it from our grassroots level to maybe a district or a state level and ensure effective reforms? And that therefore probably institutionalizing it within the government system to ensure that our work is spread across the state.
So I will take a question. There's 2 more points from the See? yeah. I think especially in around the iMobile, that can help translate. அதாவது மேக்ஸ் மொபைல் மொபைல் வந்து ஐடியாவில் வந்து ரூரல் உள்ள ஸ்கூல்ஸ் ஆர்ட்ஸ் லேங்க்வேஜ் சயின்ஸ் அண்ட் மேத்ஸ் இந்த சர்வீஸ் பேசிக் டாபிக் சயின்ஸ் மேத்ஸை பொறுத்தவரை வந்து அரித்மெட்டிக் வந்து ஃபண்டிங் ஃபீல்ட்ஸாக பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் செகண்ட் எனக்கு வந்து ஒரு விஷயம் eVidyaloka எவ்வளோ நாளைக்கு இந்த இயக்கத்தை வந்து கொண்டு போக போகிறோம், மேபி இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் டிஜிட்டல் கிளாஸ் எவ்வளோ நாளைக்கு கொண்டு போக போகிறோம், இதோட அவுட்கம் வந்து நம்மளே பண்ணிட்டு போகிறோமா யாராச்சும் புஷ் பண்ண போகிறோமா மூணாவது கொஸ்டின் ஃபண்டிங் பற்றி பேசினாங்க. ஃபண்டிங்க்கும் ஒரு சஸ்டைனபிலிட்டி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பிளானிங் இருக்கும். அதை பற்றி நம்ம தெளிவுபடுத்த முடியுமா? Rampan directly. They are both very good. eVidyaloka टीम को एक मेरा सलाह है जो अलग का देखा है। ये जो फंडिंग वाले यहाँ पे है हम लोग पार्टनर्स हैं eVidyaloka की टीम है, प्रोफेशनल करने वाले टीचर्स भी हैं, बट क्यों ना बच्चे होते तो और भी एक्सपीरियंस अपना हुनर जो सिखा होता है वो बता सकते थे। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि 2 या 4 बच्चों को इस फोरम में डालके बताइए तो शायद अच्छा Definitely take the feedback. Idea that we will immediately implement. I think it's a very interesting idea, and I think we should take note of this. And this is a good way to recognize some of the good performing children. Right? We will definitely implement it. Yeah, I know that. So his question is, there are 2 parts to it. One, he was saying that the iMobile initiative that Usha talked about is something that they are implementing already. He represents 8 India. 8 India is a partner in Tamil Nadu. And they already are implementing it in a way where they are actually going on to schools and actually teaching arithmetic, and that's already being done. His question, very similar to Yourself's question, is 2 parts to this. Till when are we going to be doing this, and when are we going to get into evolving this to actually institutionalize it with a larger, more powerful or a larger organization? That's one part of it. The second part of it was how do we, so I think it's related to the same thing as, is there a way we could actually, what's the vision, where are we going to, where the journey going to lead to, right? So where are we taking this to? It's going back to the same thing. So I want to maybe use this opportunity. I'll take 5 minutes, but it's a very important question. To give you a perspective, even to our own team members in eVidyaloka, on the strategic thinking that's actually there as an organization, right? To give you, if you want a context, there are 4 of us who actually sit on the board. Venkat, Vishi, some of you met yesterday. Ravi, who actually runs this Montessori school, this premise actually is just premising running this institution here. And myself, come rain or sunshine, we meet every week. Every Saturday we actually have a meeting, and we actually have this. So we have to make sure that there is another conversation which is about tomorrow, right? Where there is an operational team that is focused on what we are doing today, but there is a discussion on what we need to do tomorrow. And one thing that comes about again and again is, जो आपका सवाल है अभी कि हमारा कल का प्लान क्या होगा? And yeah, I want to go back to what we were thinking 3 years back, and I want to talk about what we are thinking today. This is important for all of us as partners, because all of us are actually stakeholders in this process, right? See, we actually evolved from a stage of experimentation to a stage of getting to explaining people what we are doing, to actually now slowly getting recognized as being experts in this space. I think we have come a long journey, right? When we started this 5 years back, 4 years back, it was an experiment. One sector started in training, we experimented with it. One became
2 became 5, 5 became 13, and progress slowly is getting it. So we came from the stage of questioning ourselves, are we doing the right thing? I say that there was obviously this question that was continuous in our mind, to a stage where we actually were convinced ourselves, but we had to explain to people around us, ki kaam hoga. Imagine, I mean, if you know the saying, it took 2 years for us to actually get LLP's contribution. It was actually because if they're actually investing money and the money is actually, they're contributing as a corporate, it's not personal money, they're contributing as a company. They have to be absolutely sure that this is going to work. And for them to be convinced that it has to work, there is a lot of questioning and answering. And for us to be convincing, I actually wanted to actually add something. Venkat mentioned that, L&D is builders of this nation. There is another very, very big builders of this nation, which eVidyaloka partners with. One is L&D, others are teachers. Yeah. Right? We actually are dealing with builders of this nation. And for us to actually get to go through this process of convincing, and I was not involved in the but I was telling you the example. It's a long process to convince people. And today, we are able to convince people of the likes of what we have in this panel today. It gives us a lot of satisfaction and conviction that we actually are on the right path. To us, to come to this stage has been a long journey. It's good that we are actually talking about how to take it to the next level. Now we talked about the customer, the institution we are ready to partner with, right? It's a great example to say how we are engaging with government. Maybe I'm repeating myself, but I want to talk about this for some of the benefit of others. It's kind of explaining the model, and I know I'm discussing the dynamics. One of the beauty of eVidyaloka's model, and this is because of the partners here, is this is actually being done inside the government school with the government's permission during government school hours. See, this is a very important aspect of our model. We are not teaching outside the school, we are not teaching after school hours, we are not teaching as a para school model. It is in school model during school hours. And I when I was presenting to Sanjay at LFD before I was mentioning Sanjay as IT companies, you are actually working for the time zone of the world. eVidyaloka is one institution where the world works in the time zone of India, right? So the whole world actually, there are teachers in the US, teachers in New Zealand, teachers across the planet who actually wake up during Indian school hours and actually teach Indian children during Indian school hours. This is not a small achievement. And when we actually are getting to talk to schools, when we are dealing with school institutions, we actually take the permission of the headmaster, the district education officer, the chief education officer. It's a long process. The number of approvals we actually take is a very, very long process. And it's all because of the partners here. I mean, they actually help us in getting these approvals from the local institutions. Now, when we actually are having this engagement already with the government, we are being noticed. And I want to go back to what Gopal said. You actually want to be noticed at the right time. You don't want to be noticed premature. You don't want to be noticed when you are actually evolving. Today, we actually have come to a stage where we are confident that we have indeed represented to the government, we have written to the education minister and the prime minister about what we are doing. At our level, we are making sure that we are bringing the advocacy, in a plane where we actually are bringing about what we are doing. But it is a long journey, friends. I mean, obviously, we are a very, very small raindrop in what is required as an ocean of requirement. But I guess it's the fact that we are talking about it today. कि यहाँ से कहाँ और आगे कहाँ जाएंगे और जो हमें what brought us here will not take us there. We obviously have to talk about it. That's exactly what you talk about as you disagree on sustainability because what brought you here will not take you there. You got to evolve. I think that's a fair point. And you got to have Yoma, Vishnu, and Shiva. You got to restricting what actually is not working and take it to the next level, right? So that is also part of sustainability. If I can quickly summarize the other points I want to make here is one, the journey is we want to grow and we want to grow at a pace we are not getting ahead of ourselves. जो जितने speed में हम जाके without destroying what has been created, that is important. So we grow at a pace where we are keeping, not compromising on quality. आपने बोला काम और quality दो चीज चाहिए, काम भी चाहिए, quality भी चाहिए. Quality पूरी हम उसको छोड़ नहीं सकते. So we are growing at a pace where we are not going ahead of ourselves. A. And two, sir, I think there is a larger discussion that we are having, and this is something which, in fact, when Chandra Vishnu, we actually had a discussion last time in eVidyaloka. The challenges that we currently are facing 6, 7, and 8. We're talking about child impact. We want to see the impact of the child eventually. So it's not about just this is the means to a larger end, and we recognize that.
So there are conversations that are going on right now. We do want to take it to the next level. I think it's a little premature for us to say what we have multiple options, but we definitely are thinking in the direction. And that's how I would summarize the analysis. Thank you. We are almost at the end of time. Before I summarize this session, any other point? Any other point? Yes. First, can I take 2 minutes? Sure. Yeah. I know we are stretching writing further. We are very valuable insights coming. So feel free to bring up. Lunch is just getting ready. We have 5 minutes. मैं एक दो बात शेयर करना चाहता हूँ। देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, मैं भी एजुकेशन सिस्टम के साथ 10 साल से काम कर रहा हूँ। See, government schools focus on inputs, private schools focus on outputs, and nobody is focusing on outcomes. This is the reality of education. Madam, when you ask whether my child is getting impacted, who is measuring what? तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मुश्किल सवाल हमारे सामने। चिल्ड्रन का प्रोग्रेस कौन मेजर कर रहा है? हम मैं एमपीसी से बोल रहा था, सीसी है हमारे पास, तो सीसी तो मर चुका है। तो अगर हम कुछ कर सकते हैं क्या हम अल्टरनेट असेसमेंट करते हैं? सब लोग जो स्कूल सिस्टम के साथ काम करते हैं, वी ऑल आर डूइंग अल्टरनेट असेसमेंट्स। सीसी को क्या हुआ? गवर्नमेंट का असेसमेंट और स्कूल का असेसमेंट को क्या? तो मुझे लगता है अगर हमारा काम का परिणाम हम देखना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट का जो स्कूल या जो असेसमेंट सिस्टम है उसको जिंदा रखने के लिए हम कोशिश करना चाहिए, तभी हो सकता है। और नंबर्स इतना बढ़िया है, मैं कल के हम सभी बात कर रहे थे कि भाई कैसे हम स्टेट को लेके जाए, इंटरनेशनल मार्केट को लेके जाए, आपको चाहिए हमारे यहाँ ही बहुत अच्छा है। और जैसे हमने कल बताया, अगर वो 100 बच्चों के साथ आप काम कर रहे हैं, उसके जिंदगी में अगर परिणाम लाते हैं तो एक बहुत बड़ा काम है। डोंट वरी अबाउट द नंबर्स। मुझे याद है मैं एनजीओ में काम करता था, तो एक कमिश्नर ने हमको बुलाया और बोला आपका बजट क्या है? से देन डोंट टॉक टू मी, मेरा बजट है 6000 करोड़, 0.1% of your budget. And if you don't believe that what we are doing is not good, how should I believe that what we are doing is good? मेरा 6000 करोड़ अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो आपका 6 करोड़ क्या करेगा? तो ऐसा गवर्नमेंट के पास एटीट्यूड होता है, तो आप सब भूल जाइए। हमारा काम कैसे परफेक्ट और अच्छा कैसे करें और अच्छा कैसे करें, ताकि हमको जाके न बताना पड़े, लोग आके खुद सीखे हमसे और वो अपने आप उसको वो अप्रोच करें। I think Ushan talked about after-school credit from summer camps. I think that works very well in the US, and we've been supporting a lot of students in the US. But probably it's different in Europe. मैं सबसे उमेश जी के बातों को एड्रेस करना चाहूँगा। आपने कहा कि आप छोटा काम कर रहे हैं, और एक्चुअली आप लोग ही काम कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। I think salute to you guys. I think आप लोग नहीं होंगे तो ये काम होगा ही नहीं। I think उमेश जी और जितने भी ऐसे उमेश यहाँ पे they are the real heroes. हमने कहा कैसे इसको विस्तार करें, how to promote this. Since I come from a marketing background, let me say that जब when I had a meeting with the Venkat and Ravi and तो मेरे यहाँ सवाल पूछा जाता है हमारे जो ट्रस्टीज और बोर्ड है CSR के कि आप सिलेक्ट कैसे करते हो इन चीज़ को, नॉन प्रॉफिट को सिलेक्ट कैसे करते हो? एक बार तो जब उनसे मिलता हूँ तो मुझे एक स्पार्क दिखना चाहिए पहली मीटिंग में, और उनका पैशन दिखना चाहिए, एंड दैट एग्जैक्टली जब मैं वेंकट से मिला तो मैं देखा वो चीज़। तो आपने बोला 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है eVidyaloka के लिए, और एक चीज पर किसी ने स्ट्रेस नहीं दिया, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट्स के लिए। हम जैसे कॉर्पोरेट्स जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, हमारा रूरल रीच कुछ नहीं है, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं बैंगलोर में, हमारे ऑफिस। ये eVidyaloka is a platform जो हमें they actually extend us to rural India. That's the biggest concern, of everybody, whether they're at the ministry level or ICAI, whichever working in the CSR level. Where is the technology companies going to rural? Because every technology company voluntarily, whatever they do, वो हमारे आसपास की। So this is the biggest plus point for eVidyaloka, which connects companies like us to the rural area. And the third is passion and technology. So now TV के बात करते हैं TRP rating की, everybody say TRP. So look at the TRP for eVidyaloka. Your 3 S's: T for technology, R for rural, P for passion. If you accept the TRP, you'll succeed in your goals. Thank you. Electing product and I could see eVidyaloka on the platform
Facebook network. So this Facebook network is one of the things that is getting a lot of promotion. So probably you can start using Facebook network to upload the videos to classroom का क्या videos चल रहा है और अपना story है कि जैसे start करें. There are a lot of forums that we can discuss so that as they also keep collaboration. So we think of a lot of forums to kind of discuss. And one more thing is the greater acceptance is now eVidyaloka is started in Bangalore. Now we are extending to other locations like Maharashtra, coming from Maharashtra centers, Tamil Nadu centers. So this itself is where I can also see the sustainability part of it. Companies come with Bangalore. They see Bangalore is the only place to grow. So whatever is accepted in Bangalore, we are able to replicate in other places. Thank you. So सेशन को क्लोज करते हैं. थैंक यू वेरी मच. जस्ट वेंकट ने कहा कि सेशन को क्लोज करने से पहले ट्राई एंड डू अ समरी, एक सारांश देने की कोशिश करूंगा मैं वेरी वेरी क्विकली इन अबाउट 4-5 मिनट्स. आई थिंक लंच इज ऑलमोस्ट रेडी. सो द टॉपिक वाज कि हम जो काम कर रहे हैं, व्हाटएवर वी आर डूइंग ऑन द ग्राउंड एज अ ग्रुप, हाउ डू वी इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, उसकी निरंतरता और स्थिरता को हम कैसे कायम रखते हैं. इज द मेन क्वेश्चन. बहुत सारे पॉइंट्स आए, बट लेट मी आस्क अ क्विक क्वेश्चन. जब हम निरंतरता या स्थिरता की बात करते हैं तो सबसे पहली बात क्या आती है हमारे मन में? What is the first thing? What is the first thing about when we think about sustainability of our world? पैसा first. Yes, so adaptability. Mesh said money. I think mostly, at least when I was also talking to some of the panelists before the session, when we said sustainability, Ram said it's more than financial sustainability. पैसे से थोड़ा बड़ा concept है. I completely agree with that. And I was thinking जब बात हो रही थी, I said सबसे पहली चीज क्या है जो sustainability ensure करेगी? What is the first thing that will ensure the sustainability of our work? And Usha ji is talking about it, some of the other panelists talking about it. Is the fact कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो, अगर लोग कम्युनिटी उस कॉन्सेप्ट को समझे, अगर गवर्नमेंट उस कॉन्सेप्ट में वैल्यू देंगे और अगर बच्चे सीख रहे हैं कि चिल्ड्रन आर एक्चुअली लर्निंग, दैट इज स्टेप 1 टू सस्टेनेबिलिटी. राइट? Any disagreements there? Right? Second step is organization sustainability. हमारा कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है. We've got a great idea in place, great product in place, बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गड़बड़ हो गई. कुछ लोग छोड़ के चले गए, टीचर्स छोड़ के चले गए, some instability happened, local politics हो गया, बहुत कुछ होता है. जब हम गांव या छोटे शहरों में या even बड़े शहरों में काम करते हैं, बहुत होता है. Second thing is organizational या operational stability हम कैसे maintain करें. Third thing, especially eVidyaloka के काम को लेकर, कि हमारी जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है और स्पेशली टेक्नोलॉजी की स्टेबिलिटी है, वो कैसे मेंटेन करें ताकि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो पूरी तरह अच्छी तरीके से फाइनल ऑडियंस के पास पहुंच पाए. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी. एंड आई एम श्योर देयर आर मेनी अदर्स, बट इफ वी आर एबल टू डू दीस 3 or 4 things, the financial sustainability is only the outcome. The financial sustainability जो हमारे पैसे को लेकर चिंताएं होती हैं, अगर हम ये पहले 2-3-4 चीजें अच्छे से सोच समझकर प्लान करके लोकल हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके साथ और हमसे आपके बियॉन्ड भी जो लोकल पार्टनर्स हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हो, चाहे हेड टीचर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो, क्लस्टर लेवल रिसोर्स पर्सन हो, उनके साथ अगर हम काम करें तो ये सस्टेनेबिलिटी अपने आप आनी शुरू होगी. Then we'll have more people like Abhishek, Mr. Venkat Raman, and coming on board and say idea बढ़िया है, organizations बहुत बढ़िया है, technology काम करती है, पैसे हम देते हैं. because ये तो वेट कर रहे हैं. ऐसे बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वेट कर रहे हैं कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले जिसमें हम पैसे डाल सकें. तो आई वांटेड टू क्विकली समराइज दैट. तो इस सस्टेनेबिलिटी को लेकर 2-3 एरियाज में यहाँ बातें हुई हैं. I'll bring out some of the points. तो सबसे पहली चीज, the first thing about sustainability is internal organizational ideas and strategy. स्ट्रेटजी को अगर हम एक्चुअली हिंदी में इसका अनुवाद करें तो अगर गूगल में आप करें तो रणनीति आती है. तो स्ट्रेटजी का कोई हिंदी शब्द है नहीं.
एक one of those things जो बहुत अंग्रेजी शब्द है, तो आप रणनीति समझ लीजिए. It's almost a war against illiteracy that we are all fighting. तो इस रणनीति में बहुत सारी चीजें राम ने रेस करी. एक क्लैरिटी ऑफ विजन होनी चाहिए. जो हमारा सपना है, जो हमारी सोच है, उसमें एक स्पष्टता होनी चाहिए. And there is a balance. There is a balance between practicality and desire. हम करना बहुत कुछ चाहते हैं और शायद अभी ओवर टाइम बहुत कुछ हो पाएगा, लेकिन अभी छोटे से शुरू करके उसे बड़ा करें. एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत लोगों ने यहाँ नहीं कहा, बट बहुत लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट सेक्टर का काम एक सिविलाइजेशन के लाइफ टाइम का काम, उस लाइफ टाइम का काम. which is your repeatedly said that in my lifetime maybe this change will not happen, but we have to ensure that in this civilization's lifetime we are moving in the right direction, and that becomes very, very important. But this is a very dangerous thing, because I've also seen in the development sector, once we talk about the civilization's lifetime, from बहुत आराम से बैठे. So that balance between the urgency of getting progress happening today and also realizing that we are doing something really difficult and will take time, वो balance, और ये balance हम सबको अपने internally मानना पड़ेगा, अपने external नहीं मान सकते. That's very important. Another point which came up was, Vijay said, we cannot look at internal, we cannot look at sustainability in terms of extending what we have been doing. And when we also talk about, we have to look at continuous innovation. Continuous innovation, changing as per the context, adapting to new things happening, and then innovating accordingly. Innovation को हिंदी में शायद नवोन्मेष कहते हैं, तो वो हम नवाचार कहते हैं, वो करते रहें. The third point, and these are all, in some ways internal points, is कि हमारा जो product है, जो हम actually, जो हमारा educational product है, चाहे उसका technology aspect हो, volunteer aspect हो, etc., उससे हम कैसे robust बना सकते हैं. Tushar ji talked a lot about, चाहे वो sharing of lessons plan हो, कि भाई एडवांस में हम लेसन प्लानिंग शेयर कर सकें, उसे इंटीग्रेट कर सकें गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के प्लान्स के साथ, तो दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. अगर राम ने बात की एंड में कि भाई हम कोई पैरेलल सिस्टम नहीं चला रहे हैं, वी आर नॉट रनिंग अ पैरेलल सिस्टम, well if we are not, then it becomes very important to integrate our work with the work of the government school system. Otherwise this becomes one more lesson that is happening in the school system. Second, online and offline reinforcement, whether it's mobile health plans or whether it is other ways of actually ensuring what I have taught, what has actually learning happened. And in fact, the whole paradigm India में जो teaching का idea है, वो teaching से learning पर चला है, and that's very important. So teachers are not the focus of maybe teachers should not be the focus of eVidyaloka's work. It should be the learner, and that should be the paradigm. And I'm going back to what Ryan said also, कि भाई एक बच्चा क्यों नहीं है यहाँ, एक बच्चे का viewpoint सुनना बहुत आवश्यक है. Third point was actually reviewing student performance. कि इस तरह की reports हो, statistics generate हो, teachers will also get motivated based on those results. So those are the third point is therefore related to product changes, product improvements, which are very, very important. Which came up, the internal as an organization, what can we do? Externally, some of the things which came up was volunteerism, जो spirit है, the spirit of volunteerism, how do we keep that? How do we sustain that? How do we get more and more volunteers doing this? How do we take our work and take it to the government? And government को recognize करवाएं और government में इस काम को institutionalize करना. External things. Another thing that was raised was how do we continuously keep motivating the government school teachers? That is the ultimate goal. If you really want to improve the system, then you have to work with the system and improve the ability of the government teacher. Actually, if you see, and you guys are much better equipped than I am, government school teachers is देश के सबसे highly qualified teachers. Private school में इतने qualified teachers नहीं मिलते हैं, ना ही इतने highly paid teachers मिलते हैं. Government school teachers are the most qualified in terms of qualification and the most highly paid teachers in the education, in the private education system. I'm leaving out the high cost international schools, but if you take low cost private schooling and compare it with government schooling, this is the reality. So उन teachers को हम कैसे better use करें? And last point, funding.
as I said, funding is an outcome. It is not a driver. वो पहले नहीं आता है. ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो funding is an end result of all of these things. And the point raised हुआ कि funding के sources को diversify कैसे किया जाए. अलग-अलग areas से वो funding कैसे raise की जाए. आज एक source of funding है CSR. 2% का law pass हुआ है. Everyone knows that. We now have a new CSR law. How do we now start moving beyond that? So beyond that, meaning today L&T and Velo is giving money. Tomorrow, more such organizations give money is one part. Day after, maybe people like us start giving smaller sums of money to a movement like this and take it ahead. Thank you very much. It was wonderful. I thank all panelists and I thank all participants. It was a wonderful session. Please have a wonderful lunch and rest of the day. Thank you. Thank you really very much. One round of applause for the panelists for giving valuable information and a small request from us. Can you please push on? Please start on side. I will take you. Thank you very much. Thank you for coming to the short process. Mr. Vijay. Thank you, Abhishek. Thank you, Mr. Vijay. Thanks, first of all, confirm for us. Of course, our amazing mindless moderator, keeping the crowd together, I think is phenomenal. And of course, thank you, and last but not the least, Meenakshi for sharing the session. And being present here, I think on very short notice. Archie's last moment and I still, without losing the spirit of the whole thing. Please. Yeah, thank you very much. So we break for lunch, and I request the panelists also to join us on lunch, and request every partners here to interact with people. We have a networking during lunch, and after for lunch, it's 2 o'clock, 2:30 or maybe 2:45. We'll have at 2:45, and our next interesting session. Thank you all.
Hello. 2:45. So we can start our next session in a few minutes. Let's take our seats.
सबके पास नोटपैड और पेंसिल है? Do it. Everyone has something to write with pen and notepad. You will pen and paper. Individual, everybody. You have pen and paper. Okay, pen and paper for required for this session. Yeah. Paper size. I should have pen and paper. Sure. Do we have all back here? If you missing, yeah, me, Maharashtra, Karnataka is speaking as the day comes. Yeah, 100%. Yeah, that's right. We have Tamil Nadu. Shivraj sir is coming. Yeah. So we'll go up to 4:15, 1.5 hours, and technically this will be the last session. And after that, we will have the awards and closing segment. Yeah, ready to go? Yeah, sure, take it. So I would want the delivery team also to grab a table because it is going to define the purpose of your work. Yeah. So let's have an as well of the available tables, preferably with their partners. Because it's going to involve meaningful conversation. Session will be facilitated by Ram. So, what do you want? What do you want to do? Do you want to call? See, that's that table is actually the Raj table. We have Shivraj, we have Yuvraj, we have Rajpati. Present, sir. Thank you. Please. We after a heavy lunch. Lunch was good. Very good. You should sit here. Please. So here. Okay. So we keep it entertaining. You'll have interesting sessions, sir. Huh? Like yesterday, nobody took offense yesterday. I was very worried when I went home. My wife was telling me, because somebody might be very upset with you. You are taking people's strength. Is it gussa nahi aana मेरे? नहीं ना, पक्का. What's your opinion? Say. Today's session will be a very interesting session. More interesting than yesterday. All of you have a pen and paper. कागज और कलम आपके पास है. I want you to literally listen to me. Close your eyes for 2 minutes and visualize in your mind. Silently speaking. Yesterday who was speaking, sir? Silently speaking. Everybody, sir. Jaise aap hai. You should silently speak to yourself and think of the most joyful, happy picture that you actually want to achieve in your village. जहां से आप आ रहे हैं, जो विलेज से आप आ रहे हैं, वहां पे आपका एक पिक्चर आपका मन में होगा जो आपका सपना है, जो आप चाहते हैं. वो कौन सा पिक्चर है करके आप आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए. ठीक है? I shouldn't say any eyes open. Close your eyes and let you out. But literally think of what you want to think. अगर जैसे आपका मन में इच्छा हो वैसे आपका काम अगर होगा तो वो कैसे होगा? आपका काम, ऐसा जेनरिक नहीं है, आपका खुद का काम, खुद का डिस्ट्रिक्ट में आप कौन सा इमेज को आप लेकर आना चाहते हैं उसको आप विजुअलाइज कीजिए. वो एंड कोड मनसलो ग्राम எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த நீங்க மனசுக்குள்ள மனக்கண்ணால பார்த்து visualize பண்ணுங்க. Where are you coming from? What are you representing?
Wherever you're coming from. Okay, have you thought about it? Did you think about it? Because all of us actually are working in the social sector. There has to be a meaning. हमारा existence का कुछ मतलब होना चाहिए. There has to be some meaning, some impact that we are creating, correct? So today we are going to talk about what is it that we can actually create as an impact. How can we actually help literally get to see that happen? जो हमारा impact जो करना चाहते हैं वो कैसे करें करके we want to actually do discussion. तो पहले we need to visualize what the image is going to be. तो आप वो कागज में मेरा लिखिए कि 2 or 3 things about how you see the village. Well, you can actually talk about all the children there are educated. Let's say maybe there is a lot of agricultural activities happening there. It could be that everybody in the place is employed. It could be that people are visualizing everybody to be really happy and prosperous. जो भी होगा आपका मन में जो भी आया होगा, write it down. I will not be asking you to read this, so you can write whatever you want to write. Frankly, you don't need to worry about कोई और पढ़ेगा. Don't worry about it. It is for yourself. You have to write what you are imagining. Just imagine and write it. You can write in your local language also. ऐसा English में लिखने की जरूरत नहीं है. कन्नड़ा में, हिंदी में, तमिल में, मराठी में, जो भी आपका भाषा है उसमें लिखो. ऐसे लिखना चाहिए जैसे आपको लग रहा है कि आपके आप सामने अभी भगवान प्रवेश हो गया तो बोलते क्या चाहिए मेरे को ये चाहिए ऐसा दिखाना चाहिए मेरा गाँव ऐसा होना चाहिए है ना. should imagine like that and visualize and write down what you want. So let us take clarity on what you want. So we have written down what we want. Now let's get to the next stage. One of you come this side. You're cramping it. Yes, I can see the face. Up here. So now I want you to know we have written down what we want to see, correct? What is the change we want? What is it that we want to see? We have visualized it. See it? Now I want you to write down in a fresh piece of paper. Turn the paper and write freshly. What is the biggest bottleneck or the biggest problem in achieving the vision? You are currently here, you want to go there. What is stopping you from going there?
think about this, right? So, for example, somebody may say, "Dekho, boss, I want to actually have all the children in my village to be educated, but my problem right now is I don't have schools. Maybe I don't have money." Somebody may say, "Actually, my problem is I don't have enough occupation. I want people are not employed. I actually want to get more employment in my village. I want to actually get more government funding in my village. I want to get more." There is a famine in my place. I actually need to there is water scarcity. I need to get water. It could be anything. It doesn't have to be to do with eVidyaloka. Whatever you think is your biggest problem, and what problem is stopping you from taking to that point. First, we are trying to achieve what I want. Then I'm looking at what is stopping me from going there. முதல்ல நமக்கு என்ன வேணும், என்ன ஆசைகள் எழுதியும் அந்த ஆசை நிறைவேறதுக்கு என்ன தடையா இருக்குங்கிறது எழுதும். புரியுதுங்களா? Yes, sir. Are you all ready? 2 more minutes? No more. Take your time. You understood now, madam? Now let's come to the main part of the discussion, right? So we have talked about what we need, what क्या चाहिए, we talked about it. Then we discussed about what is stopping us from getting there. We talked about the impediments. What is the problem that is stopping us from going there? Now let's get to the main part of the discussion. Ready? Now I want you to write down, think carefully and write down, how can this association with eVidyaloka help you in solving what you just wrote as your problem. Okay? We first thought about what I want to achieve. Then we talked about what is the problem in getting to that point. Now I want you to think carefully on how can this association of yours with eVidyaloka in some shape or form solve that problem. Be careful. I didn't say how can eVidyaloka help you achieve the dream. That is not the question. Achieving the dream is up to you. You are going to achieve your dream. And in the process of achieving your dream, you have some problem. Question is, how can this association with eVidyaloka somehow try and address that problem? If I solve the problem, you will achieve the dream. So this is your dream. Am I clear?
Are you ready? Yeah. So I like that Satan also go first. We will now talk about ladies first. मैडम आपको ये पता होगा just one thing, we will start with the second idea, we go second round later. But if I was to ask you, madam, what is the one thing that you and us can do together as eVidyaloka with you to help solve what you think is your biggest problem? What is that one thing? एक्चुअली देखा है मेरे सारे काम के लोग आर्थिक के सबलता मिलती है। ये मेरा पहला पॉइंट था। उससे सजेशन में ये निकाला कि और साथ में एजुकेशन मिले। मेरा सेकंड पॉइंट ये था कि रिसर्च का नियम को कौन बदल सकता है? इसके लिए आर्थिक सबलता आपको ठीक हो रही है। तो लास्ट पॉइंट ये था eVidyaloka ऐसे हो सकता है क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है जो ये टेक्निकल एजुकेशन से ज्यादा एम्पावरमेंट मिल सकता है तो वहाँ पे थोड़ा आर्थिक स्टेबिलिटी मिल सकती है। बराबर मैडम, तो जो we are doing now, वो तो अभी कर रहे हैं। तो what more can we do? See, we already are doing something. That is good. But इसके अलावा is there anything that we are not doing that we should do or we should do better, which will solve the problem? So हम जो कर रहे हैं तो और कर चुके हैं। हाँ, ये इसके ये जुड़ा। What is it you want to do? जो अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन करना चाहते हैं। तो ये जो अभी फिलहाल अभी का अभी फील्ड में चल रहा है। इसके बाद तो और 10 साल ऐसे ही चलेगा तो ज्यादा वहाँ पे अच्छी सी प्रॉपर्टी मिलेगी। So let me understand this again. So जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे और आगे और 10 साल करेंगे। ये तो ज्यादा देखिए लॉन्ग टर्म short term long term. Okay, fine. So first point, your point is continue what you are doing well. Continue what you are doing. Okay? Very good. But you understood, all of us understand what I am doing with this piece. आपको नहीं समझ आ रहा? Great. உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க ஒரு அந்த ஆசைக்கு தடை என்னன்னு யோசிச்சோம். அந்த தடையை நிவர்த்தி பண்றதுக்கு நம்ம eVidyalokaவும் eVidyaவும் சேர்ந்து என்ன செய்யலாம்னு யோசிச்சோம். அப்படி அவங்க சொல்லும்போது அவங்க பண்றோம் இல்லையா? இதையே நம்ம கண்டினியூஸா பண்ணிட்டு இருக்கோம், தடையில்லாம பண்றோம். அப்படி பண்ணோம்னாலே நம்ம வந்து என்ன அது அவங்க ஆசைப்பட்டு நடக்கிறோம் அவங்க சொல்றாங்க. Okay, who wants to go next? Yes sir, Yuvraj. What's the next? ஒரு நல்ல பேசிக் ரைட்ஸ் இருக்கும். பேசிக் ரைட்ஸ் அடிப்படை தேவைகள் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும். அதை நிவர்த்தி பண்றதுக்கு என்னன்னா அதுல ஒரு சின்ன தோணாக ஒரு கேட்டகரி மாதிரி நான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு, எஜுகேஷன் டெவலப்மெண்ட் படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம், அவங்களுடைய சஸ்டைனபிலிட்டி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது என்னுடைய ப்ராப்ளமா எனக்கு நான் நினைக்கிறது. அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் நான் போறப்ப வந்தவங்கிட்ட அனுப்புறப்ப அதை புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க. நீ முதல்ல சஸ்டைனபிலிட்டியா இருக்கியா, முதல்ல நீ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இருக்கியா, நீ உங்களுடைய பேசிக் ரைட்ஸ் இருக்கியா, நீ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கியா, அதுதான் ஒரு பேசிக் ப்ராப்ளம் இருக்கு. மக்கள் வந்து அதை புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க. அந்த இதுதான் நான் ஐடென்டிஃபை ப்ராப்ளத்துக்கான ஒரு டிராபேக்கா இருக்கிற அந்த சொல்யூஷனுக்கு அந்த கொண்டு போற நிவர்த்தி பண்றது. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? eVidyaloka வந்து அதை என்ன பண்ணலாம்? eVidyaloka வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து 100 ஸ்கூல் அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு 100 ஸ்கூல் அச்சீவ் பண்றது அது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அப்படி பண்ணவங்க எப்படி வச்சு அதை எப்படி பண்ணாங்க அப்படி eVidyaloka நான் எதிர்பார்க்கிற எப்படி ஒரு பிரின்சிபலா இருப்பாங்க அப்படின்றது என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு. Thank you. So this is translated. We can translate from all this.
using technology, how can we actually talk to the community? So there is a community communication is the second part, right? How do we communicate to the community? See, I actually want you to, before I go to the next person, I want to give a couple of inputs, right? What should I do? The purpose of this discussion is not to keep it at a very generic level. लोगों से बात करने का ये मैं फिर इसके लिए नहीं कि हम ऐसे थोड़ा थियरी बात करें तो प्रैक्टिकल भी करना चाहिए जो कल जाके आप गांव में इंक्लूड कर सकते हो तो जो हमारा आइडिया जो होंगे तो आप बोल रहे हैं कि ऐसे फोरम में आ गया भाई ये भी लोग आप लोग हैं इधर आप क्या मेरे साथ बैठ के ये कर सकते हो क्या मैं आपके साथ ये कर सकता हूँ क्या मेरा ये इच्छा है कि मैं ये करूँ लेकिन आज तक मेरे को मौका नहीं मिला आप मौका देने वाले हो क्या ऐसा बातचीत होना चाहिए जो कल सुबह जाके हम लोग अपने गांव में इंप्लीमेंट कर सकते हैं We should actually talk about things that we can go and implement tomorrow morning in our villages. That's the purpose of this, right? I'm not suggesting that you should of course think big, you should think long term, but I want you to think about what can be done tomorrow morning. So, implementable ideas so we can work together. Sorry. Hello. Actually, first question start வந்து எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து எல்லா குழந்தைகளுக்கும் தரமான கல்வி கிடைக்கும். அது உறுதி பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாத எல்லா குழந்தைகளுக்கும் காலேஜ் வரை படிக்கிறதுக்கான உத்தரவாதத்தை வந்து தொடர்ந்து உறுதி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து. ஏன்னா இன்றைய சமூகம் வந்து கல்வியால் மட்டும் மாற்ற முடியும் முக்கியமான ஒரு சொன்னாங்க. ரெண்டாவது எங்க கிராமத்துல வந்து நூலகம் இருக்கு, ஒரு சைடு கிடக்கு. அதனால வந்து ரெண்டு நூலகம் இருக்கு. அதுல வந்து இன்டர்நெட் வசதியோட வந்து எல்லா வசதியும் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடிச்ச பசங்களும் பயன்பெறுவது வந்து அந்த இதுக்காக நான் எடுக்கிறது. இதுக்கு உதவியாக வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜி. அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து எங்க மக்களுக்கு ஊர் மக்களுக்கு இருக்கிற கல்வியோட அதாவது கல்வி அறியாமை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இன்னமும் நிறைய பேர் அவங்க படிச்சு என்ன செய்ய போறீங்கன்னு தான் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி தான் இருக்கும். இந்த லைப்ரரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சிஸ்டம் அந்த தேவைப்படுகிறது. eVidyaloka வந்து பெருசா ஒரு விஷயம் கேட்கிறாங்க. நம்ம எடுத்துக்கிற ஒவ்வொரு கல்வியும் மூன்றாம் வகுப்புல இருந்து அந்த குழந்தை காலேஜ் போற வரைக்கும் எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம கவர்மெண்ட் தவறிக்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு லாங் ஆர்கனைசேஷன் மிகச்சிறந்த ஒரு வழியா இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன செக்யூர் கேட்டாங்க காலேஜ் சொல்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ லைப்ரரி அந்த லைப்ரரி வைக்கிறது வந்து அந்த இன்டர்நெட் லைப்ரரி படிச்சு முடிச்சவங்களும் வெளி விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு படிச்சிருக்கான வெளியே போறதுக்கும் கல்வி சார்ந்த ஒரு விஷயம் இன்டர்நெட் சார்ந்த ஒரு கேட்கிறேன். ஸோ அந்த விஷயங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. So I just translate this. इनका इच्छा है कि जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बस ये अभी तो क्लास 5, 6, 7, 8 तक हम सिखा रहे हैं. तो इनको कॉलेज आने तक हम सपोर्ट करें. इनका शिक्षा उधर 8 स्टैंडर्ड बंद हो तो और आगे बढ़ने के लिए जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए. That is his first point. Second point is he wants to actually in his village construct a library which actually also has a computer with internet connectivity, which is allowing for children to actually use the library. So not only during school hours in the school, but also use the library infrastructure for post school. School के और आगे मतलब school के बाहर भी उनको पढ़ने का opportunity होगी. So you can write down these 2 points. So point 3 is sustained education for the child, and point 4 is a e-library, right? Because he's talking about using internet. This third point is something which I want to ask because this is one of the topics that we believe we actually have to do, which is, see, currently we are teaching for class 6, 7, and 8, right? So 8 के बाद क्या हो रहा है? तो eVidyaloka is so पहले ये समझा लो कि why did we choose class 6, 7, and 8?
So when we actually started the eVidyaloka program, शायद ये statistics some of you know, किसी को नहीं पता होगा. India में 90% of the government schools are in villages. 90% schools गाँव में. तो उनमें से क्लास ड्रॉपआउट का स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो 50% ऑफ द ड्रॉपआउट इज आफ्टर द एज ऑफ 10. जब बच्चे का 10 उम्र होता है तो स्कूल से बंद जाना बंद हो जाता है. और दैट इज प्राइमरली बिकॉज द चाइल्ड इज बिकमिंग एम्प्लॉयबल एज. चाइल्ड एक्चुअली गर्ल चाइल्ड इज नो फैसिलिटीज इन द स्कूल. और पेरेंट्स आर एक्चुअली वो काम हो जाए भाई तो आगे मेरे साथ काम करो पैसा हो जाएगा टेक यू. ऑल ऑफ यू मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग. So we realize that if we can continue the schooling for 6, 7, and 8, then we will be able to sustain this. And also in the very remote villages, जहाँ से हमारे schools तो एक तक ही होगा, तो 9th and शायद वो जो एक टाउन में जाते हैं, पास में टाउन होता जा रहा है. So this is the situation right now. So one of the biggest problems that we are actually trying to face, and here the contribution that you should be making, is how do we make children actually go to class 9, class 10, and how do we make them sustain the education? To us, this is the big question mark, right? I don't think we can find the answer to this on our own. I think there is a lot of participation that can happen. And ऐसा नहीं कि एक ही solution होगा इस प्रॉब्लम का. हर एक विलेज का, हर एक गांव का, हर एक स्टेट का, हर एक चाइल्ड का डिफरेंट प्रॉब्लम्स है. तो आपसे ये सुनना चाहूँगा कि what is it that you can do on this particular point? So we come up with point, the third point about sustaining the child's education. अगर वो child का impact जरूर, if the child actually eventually has to study further and create an impact, then the child has to be supported in studying beyond 8. What can we do as partners, as eVidyaloka partners? What can we do for doing this? This is one thing I really wanted to think, and thanks for bringing the point as well. Who wants to go next? Yes, sir. सर हमारा गांव जो है नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट है उसके 8 किलोमीटर के ऊपर है. 1 to 10 तक स्कूल है सर, प्राइमरी और सेकेंडरी. 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है और बीएड कॉलेज भी है. क्योंकि ये सिटी के नजदीक है इसलिए वो बड़े लोगों ने ये बीएड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स रखे. लेकिन मेरे गांव के बच्चे वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल का फीस 25,000 आपको है सर. तो वहाँ एक ही बच्चा हमारे गाँव का पढ़ने को नहीं जाता है. और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा गाँव में 70% लोग जो है वो फार्मिंग के आधार पर रहते हैं. near about 1,300 hectare agricultural land है सर. फिर भी इकोनॉमिकली वो बहुत वीक है क्योंकि जो फार्मिंग करते हैं तो उनको वाटर बजटिंग, इरिगेशन, क्रॉप सिलेक्शन इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं. तो मैं eVidyaloka से ये चाहता हूँ कि जैसे हम ऑनलाइन डिजिटल स्कूल का टीचिंग करवा रहे हैं वैसा अगर वीकली या मंथली फार्मर्स लोगों के लिए ऐसा कुछ अरेंजमेंट की करे तो वो बेहतर है. हम लोग हमेशा ये सवाल पूछते हैं क्या स्किल्स चाहिए लोकली लोगों को, हमको जानकारी नहीं रहता यहाँ. Yeah, answer the response to What is the question? questions. The problem that you face. Whatever you said, Yes. Are you able to translate? Yeah. Like you guys are. Very good. Are you able to translate? Yeah. Okay. Translate. Okay, sure. जब भी
स्किल डेवलपमेंट की बात आती है तो ये वाला इसका कंफ्यूजन तो टाउन पे पीपल कीप डूइंग नेचुरल स्किलिंग ऑन कारपेंटरी तो टीचिंग मैकेनिक ज्यादा से ज्यादा स्किल्स सिखाओ सो दैट दे फाइंड बट वी आर नॉट कन्विंस्ड कि यही सही चीज है तो एरियाज में उन लोगों का जरूरत अलग है तो हमको समझ में नहीं आ रहा और इसलिए इस सेशन को एक्चुअली फायदा करता है बहुत ही बढ़िया परसेप्शन दिया है कि क्या चाहिए मेरा डॉक्टर सवाल आपको ये करना है आपका इच्छा क्या है मतलब जो का यदि टॉपिक कल्टीवेशन में जानकारी नहीं है और नहीं पा रहा है तो दूसरा कुछ जॉब स्किल्स स्किलबल एम्प्लॉयमेंट होना संभव है या जरूरत है या उसी जो क्षेत्र का जो ऑक्यूपेशन है उसी में डेवलप करना जरूरी है इससे मतलब ये मानो आप बोल रहे हैं कि उनका इंफॉर्मेशन दीजिए क्रॉप्स और कल्टीवेशन एडवांस टेक्नोलॉजी और उसमें राइट तो जस्ट क्लैरिफाई क्वेश्चन क्योंकि लास्ट पिछले साल हमने एक सवाल बातचीत करा राइट कि वहां लोकल स्किल्स क्या है व्हिच यू कैन ब्रिंग अगेन ऑनलाइन राइट तो आई वांट चैलेंज अगेन एक बार पूछा क्यों उसमें पैसा नहीं है तो क्यों उसी चीज में वो करना चाहिए उनको सब ज्यादा एग्रीकल्चर के बारे में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके बारे में मालूमात नहीं है और ऐसे भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वो हमारे डिस्ट्रिक्ट से बहुत लॉन्ग है सर और जो प्राइवेट कंपनी वाला आता है वो फार्मर्स लोगों को वीडियो फिल्म या उनके एक्सपर्ट के द्वारा बताता है लेकिन उनका कंपनी का प्रोडक्ट का वो नहीं करता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो मैं ये सवाल पूछूंगा कि बच्चा लोग पढ़ रहा है स्कूल में क्या गारंटी है कि वो साथ जाके सेम कल्टीवेशन या क्रॉपिंग करेगा तो सर कैसा है कि ये बच्चे भी फार्मर्स लोगों के साथ ऑनलाइन या जो इंफॉर्मेशन मिलेगा किसी आईसीआर से या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से तो इसका इरिगेशन सिस्टम क्रॉप के हिसाब से कैसा रखना चाहिए वो वहाँ कैसा है कोई फार्मर बना हुआ है कोई फार्मर बना हुआ नहीं है तो उसका बच्चा वो देखिए the same point came last time, right? I remember Secretary Kulkarni brought that point that we had one action item, which we partially they are giving a small portion of it we did that we don't bring the parents and आगे क्लास में बच्चों को सेशन देते हैं आज ये हालत है कि बच्चों समझते हैं कि मेरे माँ बाप जो कर रहे हैं वो कुछ पुराने जमाने का था राइट मैं पढ़ के तो कर रहा हूँ अच्छा जाओ तो वैसे इमेज बनाया होगा राइट हाउ टू प्रमोट local और rather feel proud about कि मेरे माँ बाप जो कर रहे हैं मुझे करना चाहिए there is nothing wrong so we did a couple of parent interaction sessions and just update you of the point but we definitely did not do a good job of thoroughly getting it done just our problem at the stage now we can readily talk about the children I think the same point continues this time as well so I suppose that the idea is in this crowd can I have the inventory of 5 or 6 skills, not skills. You know, skills nahi actually knowledge, right? And identify such 5 or 4 or 5 knowledge areas of the region. Yeah. Can we get that knowledge areas identified? Who is the right person to do it? ये teacher को definitely काम के बारे में नहीं बता सकते. हमने किताब लिखा हो वही लिख के पढ़ाएंगे, right? So there has to be a certain expert who has to do it, right? So now just like how this region, can we get from every region on what is relevant occupation or economic region of that particular region? Can we probably do that exercise? So we do that, but I think we should write down that local occupation, I think that is the whole idea. There is a localized occupational training. But I think that's a very interesting question here. There may be points about what we can do directly and what we can do to bring in people who can do the teaching, right? So it's a very interesting point. Please come back to the class. Sorry?
organic education, very difficult task. But my guess is that this will be done. So where is that market? Where connect to market? Because what today now we have to do. So here is that market. Reverse window. Very interesting. So this is just to clarify. See, he comes from a place where there is a lot of organic farming. जो उनका प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, ये हमको बना दिया है, इसको बेच नहीं पा रहा है, तो ये क्या eVidyaloka का कुछ हेल्प कर सकते हैं इसके बेचने में? हाँ? No, it's not. It's a very important question because अगर वो प्रोडक्ट्स बेच नहीं पाए तो उनका कमर्शियल वैल्यू भी नहीं होगा, अगर कमर्शियल वैल्यू नहीं है तो काम बढ़ेगा नहीं, तो ये तो it's a matter of survival, right? Very interesting point. Yes. एक्चुअली शुरुआत में हम 3-4 साल पहले जब स्टार्ट किए थे तो हमने ये बात briefly came what you said right now briefly came out of the heads on how to sustain revenue wise cost wise of our digital classroom in the villages. One of the thoughts that came in was why the TV is the window to the world for the children. The internet can be the reverse window of the village to the world, right? So I want to socialize this idea. Umeshji, Ageshwar Rao, Chaudhary sir, each one of you get a question, right? Will there be a need say this classroom? आप लोग उल्टा products e-commerce की लोग बात कर रहे हैं, right? गिरिडीह में मैं देखा हूँ actually, हमारा class assistant जूता खरीदते हैं from Snapdeal, right? Then they are procuring products, right? Why can't people in town, right, procure products from these places where we are selling? So I want to see the idea. Is it viable? We don't know. Will each of your partners be interested? Suppose we say we create an e-commerce catalog product. आपका साइट का www.giridih.com, www.keralamattam.com will sell 10 products. Do marketing outside, they will come and buy. Is this a viable idea? Just hypothetically, I will say. And it's a project, so it's an initiative or a program that we can run, which will drive sustainability. Believe कि मैं यहाँ produce करूँगा तो I can actually sell elsewhere beyond my. That's what eVidyaloka can do. We can do one thing. This is an idea that we actually have in our website, sir. We actually are talking about the various partners. Now, what we can do in eVidyaloka's portal, we can actually say each of these partners actually do all of these other things also, and actually give a web link to your website. If you have one website, we can connect you to your website. We can definitely create from our standpoint, we can create a page that actually promotes it. Some way we are doing it right now, but we can even do it a little more. But the question is one step further. The question is, in this community, we have people in Karnataka, we have people from Jharkhand, we have people from Andhra, we have people from Maharashtra. Do you think, in your conversations with any of them, they can actually be your customers in the respective states? Do you see any such viability? Maybe it may not be for organic products, maybe for something else. The question is there a relationship that can be built amongst these partners beyond just what we are currently doing through children education? That is the question, which helps you to actually do whatever else you are doing even better. But I'll give you an example. Let us assume that we actually have a wildlife protection program going on in Tamil Nadu.
The learnings of that can be used by somebody else who's doing wildlife protection elsewhere. We talk about watershed projects. There could be watershed projects happening elsewhere. You are talking about organic farming. Maybe organic farming can be something which people can adopt. But they don't even know that there can be organic farming. You could possibly teach them. Your farmers can teach, so there's a language barrier, but we'll overcome it. But the internet is a connectivity that could be established. Such ideas. இப்போ சொல்றது இப்போ நீங்க இருக்கிற நீங்க ஜார்க்கண்ட்ல ஆள் பாக்குறீங்க, ஆந்திரால இருக்காங்க, மகாராஷ்டிரால இருக்காங்க, கர்நாடகால இருக்காங்க. நீங்க இவங்க பேசும்போது இவங்களே உங்களுக்கு கஸ்டமராகவோ இல்ல உங்களை பார்ட்னராகவோ eVidyaloka ஒரு எஜுகேஷன் தவிர இதை தவிர்த்து மற்ற எந்த செயலும் செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு பார்ட்னராக வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு இஸ் தேர் பாசிபிள்? You don't only realize things which you want. So I realize that organic agriculture. So for marketing, another thing that I can go to teaching. Everybody provides this industrial life. They can we do that. I think this idea they will implement immediately. Yeah. He's hiding. So I am saying that this idea that is being proposed here of every partner what they do. If you have your own website which promotes your products, eVidyaloka can provide a link on our website saying here is our partner, this is what they do, please click this link to know more about this partner. Which will automatically give, from our standpoint, there is a platform that is connecting all of us. This week, in the way we are doing it right now, we will actually be more conscious about this. That we can do. Yeah. Since he was talking about marketing the products which they are working. So my suggestion is that right now, after you go back to your places, maybe when this academic year starts, you people will be using Facebook at work. So if you first put these products on that Facebook page from your group, the teachers who are looking at these products will share. So this is a great idea. Please write it down. Great idea. So I think we can pack up and go here. This one idea is enough for the whole session. Paisa vasool. Okay, very good. Yes, sir. Who wants to go next? ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುವಕರಾಗಿರೋರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಈ ವಿದ್ಯಾಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ತರಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ये बोल रहे थे कि आपको ज्यादातर प्लांट्स को लगवाना, उनको एनवायरनमेंट को पोषण करने का ज्यादातर परिसर संरक्षण का काम है। पर इतना ज्यादा काम परिसर पर इतना अवेयरनेस देते हैं, कम्युनिटी को देते हैं, बिजनेस को देते हैं, फिर भी उनमें अवेयरनेस नहीं आ रहा है। अगर eVidyaloka से बच्चों में इस परिसर का एनवायरनमेंट को अवेयरनेस मिले, ट्रेनिंग मिले, तो ये कामयाब हो सकता है। Very good. புரியுதுங்களா? படிப்பை தவிர பள்ளிக்கூடத்தில் படிப்பை தவிர நீங்க வந்து சுற்றுச்சூழல் பத்தி, என்வாயன்மெண்ட் பத்தி எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அதனால வந்து அவேர்னஸ் ஜாஸ்தியாக பெரியவங்க சொன்னா மட்டும் போகாது, குழந்தை சொல்லி தரணும். அதனால வந்து அதனுடைய மதிப்பு, அதனுடைய இம்பாக்ட் பரவலாக இருக்கிறது.
Valid point. Very good point. So we should actually talk about promoting awareness among children beyond their school, right? So this is yes, sir. So there are two parts to this. One is we talk about, in fact, I want to bring up the topic of value education. The second is, of course, what we call as environment hygiene and so on. This, I think, we actually started. So I want to quote a teacher in Sakamangalam who was teaching for the forest and forest conservation. She was just showing pictures of trees everywhere and for telling them maybe 40 साल पहले 50 साल पहले इतने पेड़ थे, हर पेड़ के नीचे कोई मंदिर था, कोई भगवान की मूर्ति थी, कुछ था, क्योंकि लोग ऐसे डरते थे कि पेड़ काटने से भगवान से उठाने देता है वैसे. So in one way or other, पेड़ ज्यादा है, पेड़ कटने का डर था. So that is actually one part of conservation of forest. Now then she came to the children telling, when we had so many greenery 40 years back, why it is not? So every year, at the start of the year, every child should plant one tree in their school premises, so that if it maybe when a child comes starts at class 1 or class 2, whenever a new child is entering into the school campus, they should plant a tree so that when they move out after 5 or 6 years, उनके मन में ये होगा कि अगर 10 साल बाद उसी स्कूल में वापस आएंगे कि उनके नाम का एक पेड़ होगा. And she is assured that she will talk to the whoever is concerned, get them some saplings and at least get it done for her class of which she is actually delivering classes there. And she is actually asked us to promote this, like telling them, so whenever you start a year, see how many students are we going to teach. उनके नाम का हर एक सामने हर एक स्कूल में होना चाहिए. एक सवाल पूछना चाहता हूँ जिससे आप मतलब सारे कॉन्फ्रेंस का एक रिप्रेजेंटेशन से या इंडिविजुअली भी हाँ या ना कह सकते हैं. तो हमारे पास अभी डिजिटल क्लासरूम है, तो स्कूल के टाइम पर क्लास हो रही है, राइट? क्लासेस गोइंग ऑन ड्यूरिंग द स्कूल. So after the school, that is say after 4:30 say to 6:30 or in a Saturday and Sunday, is the school resource can be used for bringing the same children or the adults in the village there and conduct anything we want. Awareness program, yeah, financial literacy, yeah, training on cultivation, right? Maybe advanced technology on न्यू ऑर्गेनिक फार्मिंग. इस तरह का स्किल्स जो रेलेवेंट है ये हो सकता है कि नहीं. आपका मतलब क्या असेसमेंट? मे बी शो ऑफ हैंड्स, कितने लोग कितने पार्टनर्स कह रहे हैं कि हो सकता है? आई सी ओनली 2 hands, 3 hands. हो सकता है जो आदमी करे कि आप हो नहीं सकते. या मैं स्कूल के अंदर के सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिस्टम इनसाइड द सिस्टम. हो नहीं सकता. Is it not possible? इसमें कोई समस्याएं हो सकती है. Let me say not possible. Will there be any problems? I would have asked you. तमिलनाडु स्कूल allow करूँगा. Correct, right? In school they are not allowed actually in Tamil Nadu. I know for sure, right? In Karnataka, will they allow in the school if the local community says? Do. Huh? Students will allow, not community. Maybe some teachers are No, it's not teachers. It's not teachers. You will go and conduct, taking the permission of the school. Yeah. So now that is a no, right? Karnataka no. Jharkhand. आप मान स्कूल में आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आपको स्कूल में परमिशन मिल सकता है करने के लिए उधर. झारखंड में मिल सकता है. आंध्रा is saying we can do it. हाँ, नहीं
children. See, what is saying, some skills are required for adults. जो गांव में है, like people were saying in the village, mainly financial literacy. हमारे पीछे एक group पड़ा हुआ है, but I mean, sorry, in a group is waiting. I want to give financial literacy. I will give you money. I will give you this thing, right? Can you go and use this infrastructure to teach? We want people to know about financial literacy, right? We are holding back, saying that we don't want to put partners in pressure or trouble, right? Without knowing whether it is doable or not, right? We are not committing fully per se, right? So, Japan say seeing positive this thing, right? Because I think this need is fine. It's not like we could say this level of administration will be openness. Yes. ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಈ ವಿದ್ಯಾಲೋಕದ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ಆ ತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. We'll introduce a session for parents. Hello, good morning, school. Huh? School time में मत करो. Sure. स्कूल में अलाउ करेंगे जरूर, क्योंकि हमने अक्षरा फाउंडेशन के साथ काम किया है 10 साल। अभी भी अक्षरा फाउंडेशन चल रहा है नॉर्थ कर्नाटक में। हमने स्कूल में ही लाइब्रेरी बनाया था, कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर बनवाए थे। वहाँ पे भी कंप्यूटर था, स्कूल लाइब्रेरी वहाँ पे था, और बच्चों को खेलने का दिया हुआ जो भी बच्चों को लगने के लिए चाहिए सभी था। वहाँ पे पेरेंट्स भी आते थे। तो स्कूल में हो सकता है वो जो हमारे कम्युनिकेशन पे जाता है, डिपार्टमेंट पे जाता है, डिपार्टमेंट पे हमारा कैसा कम्युनिकेशन रहता है उस पर डिपेंड्स होता है। सो टीचर अलाउ करें या ना करें, अगर बीओ टीडीपीआई हमें परमिशन देगा तो जरूर हो जाएगा। साथ में सिर्फ वो कम्युनिटी स्कूल का एक रूम eVidyaloka के स्टाफ को ही नहीं रहना चाहिए, या ताकि कम्युनिटी के लोगों को भी वहाँ भी इन्वॉल्व करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एसटीएमसी होते हैं वहाँ पे, एसटीएमसी को होना चाहिए, युवक संघ संगठन होता है उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। महिला संघ होते हैं वहाँ पे बहुत सारे, उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। साथ में पंचायत के सदस्य होते हैं उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, जरूर होगा। Sure. So it has to be a local. That's what he says. Is object to condition. Actually, the கேட்கறதுக்கான ஐடியா வந்து ஆன்லைன்ல வந்து ஃபார்மர்ஸ் ஏதாச்சும் கொடுக்கணும்னு இருக்காரு. பாசிபிள் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் கல்வி கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அரசுங்கிறது அமைப்புல நாம் பண்ணிருக்கோம். ஏடிபியாவது அரசு விவசாயிகளுக்கு வந்து ஒரு பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த இதில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ஆன்லைன் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரூம் கீழே நானே ஒரு மணி நேரம் லேட்டா வந்து ப்ராப்ளம் வரோட வந்து இருக்காங்க. தனியா இருந்தாலும் நம்ம சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ண விட மாட்டாங்க. அதான் நம்மளால ஸ்கூல்ல பண்ண முடியாது. ப்ராப்ளம் என்னன்னாக்க ஹெச்எம்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னாக்க லீவ் டைம்ல வந்து அவங்களோட ஆஃபீஸ் அந்த ஸ்பெஷலா மெட்டீரியல்ஸ் கீ தர மாட்டாங்க. சரி, நானே இப்போ வந்து அங்கே வந்து ஒரு நர்ஸுக்கான மீட்டிங் நடத்திருக்கேன், பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் நடத்திருக்கேன், ஸ்கூல்ல தான் நடத்துறேன். பட் அந்த இதுக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. நம்ம ஆன்லைன்ல கிளாஸ் நடத்துறதுக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து continuous or can you do it or not? Sorry. Yeah. Separate system you are putting. Separate system is okay here, sir. So that's a good possible. Within 15 minutes you are able to see a change. You can clarify. Yeah. What are the mechanism? No problem. But can it be seen? What we are trying to do? I see two possibilities. One is STMC organizing an event. All STMC members are representatives or members. They can bulldoze the school system and say, we will organize because of the eVidyaloka infrastructure. Then they will get it. The second, the school organizing an event on Saturday. Then they say, we are not going to school yet. I think the partner, school organizations, you want to run say a financial literacy. You can't
Fantastic. हम लोग इसमें रहते हैं और हम लोग एक ग्रुप पकड़ कर काम कर रहे हैं 6 से 14 के बच्चे लेके आते हैं तो हम 6, 7 और 8 क्लास तक पढ़ते हैं तो 10 साल के बच्चे आते हैं और 10 साल के बच्चे जब ऊपर जाते हैं तो हम यहाँ जितना करते हैं कि जब 8वां में हम उसको छोड़ देते हैं कुछ एजुकेशन करके क्वालिटी एजुकेशन करके छोड़ते हैं तो उसमें से 25% 30% बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं जो हाई स्कूल तक नहीं जाते तो हमें चिंता करनी चाहिए कि उसको स्कूल ले जाना कुछ ऐसे करें बच्चे जिसके लिए कुछ हमें स्कॉलरशिप प्रदान करना कि उसको से दूसरा हम एक ग्रुप जो पकड़ रहे हैं वो एक ग्रुप को अंग्रेजी में एडोलसेंस ग्रुप करते हैं किशोर ग्रुप करते हैं किशोर किशोरी की अवस्था और ये बहुत भटकाव की अवस्था होती है वो बच्चे का भटकाव आता है इधर उधर दौड़ता है और यहाँ पर हमें बहुत जरूरत होता है इसको लाइफ स्किल ट्रेनिंग देने हमें इस प्रोग्राम में डालना चाहिए कि जो बच्चे मतलब जिसको हम पकड़े हैं क्या उसको हम लाइफ स्किल का ट्रेनिंग कैसे दें कि अपना जीवन कौशल कैसे दे सकते हैं ये ऑनलाइन पॉसिबल है क्या ऑनलाइन प्रोसेस हो ऑफलाइन प्रोसेस हो जिस तरह से हमारे पास उसका मॉडल तैयार किया जा सकता है तो उसको लाइफ स्किल देना जरूरी है उसके मन में ये है कि पढ़ के नौकरी नहीं मिलेगी भटकाव की स्थिति यहाँ पैदा होता है नौकरी नहीं मिलेगी पढ़ना छोड़ देता है तो मैं जिज्ञा तो आपके क्षेत्र में लाइफ स्किल्स क्या है लाइफ स्किल हमारे क्षेत्र में लाइफ स्किल के कई तरीके एक तो अपना जीवन जीने का स्टाइल है पर्सनल दूसरा है कि हमारे क्षेत्र में जो ऑक्यूपेशन है जो आपने पहले बात किया वो इसको क्या गरीब क्षेत्र से बच्चे आते हैं दर्पण पत्ता और वो बेचते हैं उसके बाद भी पढ़ने के लिए जाते हैं ओके आपने जो अभिभावक है पेरेंट्स है उसके रोजगार में भी वो मदद कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा ओके वो भी मदद करने की बात उसको और तीसरा जो हमारा बहुत बड़ा ऑप्शन है कि हमारा हर स्कूल में सेटअप है बैटरी है एजुकेशन है ये हम उसको कंप्यूटर एजुकेशन से क्यों नहीं जोड़े जब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी तो कंप्यूटर एजुकेशन में हमको देने का जरूरत है कंप्यूटर की जानकारी उसको देने का जरूरत है अगर ये संभव हो किसी जोड़ सके लोकल स्तर से समुदाय स्तर से तैयार करके हम 5 लैपटॉप एक सेंटर में हम प्रोवाइड करेंगे इसलिए मैं ये सवाल इसलिए मैं ये सवाल पूछा था कि कोई ऐसा एक्स्ट्रा चीज कर सकते हैं फंडामेंटल ये यदि लग रहा है कि हो सकता है तो फिर उसमें क्या देना चाहिए वी कैन डेफिनेटली डिसाइड कंप्यूटर स्किल्स को लाइफ स्किल्स को अभी त्रिवेणी में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे बात कर रहा हूं वो कह रहे हैं कि हमको गांव में पहुंचना है हम बोल रहे हैं आइए ऑनलाइन आपको दिखा देंगे ऐसे क्षेत्र में जैसे आप क्योंकि उनका लाइफ स्किल्स एकदम प्रूवन है राइट पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस जो है उसको डिलीवर करने के लिए हमको मैकेनिज्म चाहिए लेकिन eVidyaloka जैसे पार्टनर की सहयोग के बिना नहीं हो सकता ये तो स्कूल में आगे अपने मॉडल वर्कआउट देख लिए हैं अब ये सेंस करना चाहते हैं समझना चाहते हैं कि इस पार्टनर्स विल बी वन इंटरेस्टेड टू इज इट डूएबल and I am hearing a very positive sign actually that both are possible and doable with the existing set of partners. Okay, sure sir. Any more points? Yes. eVidyaloka program is running for 6 to 14 years of children. And after that, in 10 to 14 years of age group, and if it comes to age 15, the adolescent period starts in India. So this time they don't find what is right and what is wrong. Which way should they go and not to go? The vocational guidance is the most important, I think. Because at this age they will be mature to do something to earn their own livelihood. So I think vocational guidance and training based on the local resources is essential to guide them in a proper way so that they can earn their livelihood. Who can train this? ये बाकी तो अर्बन आ चुके हैं सिटी में उनको पावर नहीं है मतलब बहुत बड़ी बात है Okay, these are local coordinators. We can be trained by yours or by. But who is that remote person who is an expert? तो आपके क्षेत्र में मान लीजिए क्रॉप कल्टीवेशन अवेयरनेस देना चाहिए कह रहे हैं बट कौन पढ़ा सकता है किनके पास है वो नॉलेज जिसको अंडरस्टैंडिंग मास्टर किनके पास है वो नॉलेज पढ़ाने के सेम हियर वोकेशनल ट्रेनिंग हु कैन गिव इट हु इज द राइट पर्सन टू गिव इट Makes sense.
हमारा अच्छा बड़ा है मतलब बहुत सारे बच्चों का अच्छा नौकरी है। उसके बाद जीवन कैसे करना है, लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जैसे शादी होते हैं प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। तो इनके स्कूल लेवल में जीवन कैसे करना है, लाइफ साइंस जो होते हैं वो हमारे रिकॉर्ड के कुछ किताब लाए हैं। और हम अभी जो सोच रहे हैं और कुछ सिखाना है तो उसमें जोड़ करके हम इसी ऑनलाइन में हम सिखा सकते हैं। थोड़ा और सिलेबस वगैरह और कुछ है ऑलरेडी इनके किताब है उसमें भी कुछ बात करना है कुछ लीडर्स who can emulate such a जीवन का आधार किया है, so we can emulate those students can emulate those people. So we can help that aspect. What are the other items also we can improve, and we are also almost together with this online education. And we want to, in fact, we are there with both places. We are there in both places, but when I apply from economy sectors, both questions. One thing is all computer setup and security. Second thing is usually सिखाना चाहते हैं whatever we are working, it should be done. These students are very active. Excellent. Thank you. So I think that's a great point. You were saying. This can be done after the schooling hours of the school. So it will be a capacity building program. So I don't think they will oppose it. And in this way, experts can be called through online and give some interaction with the local people. Who is the expert? You can search and you will get names. There are so many persons who can be who gives vocational guidance. No, there are. I can help you find. Okay, sure. Yes, sir. मैं पूछ रहा था कि आपके नंबर पर नाम नहीं लिया नहीं, मतलब क्या ये जो स्कूल्स में आप काम कर रहे हैं, इसमें वर्क आफ्टर स्कूल्स में कोई एक्टिविटीज हो सकता है जो मतलब गांव की फायदा के और उनके पास है? हाँ, अच्छा हाँ। उनके पास अभी आपका क्षेत्र में क्या स्थिति है? आपके स्कूल्स आप कर पाएंगे? लास्ट 3 साल पहले हमने सुल्ला फाउंडेशन के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 20 स्कूल के साथ सर ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम दिया था। तो वहाँ पे है ना जो स्कूल के बच्चे थे, हर एक बच्चा स्कूल में से उच्च डिग्री गाँव में निकाला था सर, और हर एक का घर जिस उस गाँव में जो स्टूडेंट था उसका घर आया तो उसके माता पिता को एक प्लांट्स लगाने के लिए हर एक घर को 50 स्टूडेंट देता था, और स्कूल में भी लगाया और स्कूल के और गांव के सराउंडिंग में जो रोड्स थे उसके ऊपर भी पेड़ लगाया। Okay, sure. So it's possible to do Possible. ये सारी डिस्कशन के बाद कौन करेगा, कौन एक्सपर्ट होगा कि हमारे पास सेक्शन है, या तो वो एग्रीकल्चर हो या फिर एजुकेशन का हो या तो ये तो आपका दूसरा सेक्टर का है। कौन है ये प्रश्न हमारे सामने है। मैं एक सॉल्यूशन बताना चाहती हूँ। जैसे अगर हमें फार्मिंग में काम करना हो तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ बहुत सारा काम करेंगे, क्योंकि मेरा पिछला संस्था में जो मैं काम करती थी वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस है, सारे डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट के लोग ये देख रहे हैं कि कौन आगे हमारा सहायक बनेगा, हमारे यहाँ जो फैसिलिटेशन अपने पास है वो लोग कैसे आगे लेंगे, वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है।
जाने अप्रोच आ रही है तो सारे सभी में ये डिपार्टमेंट का नाम लेते हैं वो सारे डिपार्टमेंट के लोग ऐसा रास्ता देख रहे हैं कि उनके दो बातें उनकी यहाँ पे फैसिलिटेशन है वो ले लिया फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लोगों को वो जो सीड्स के बारे में बताना चाहते हैं फ्री बताते हैं फ्री एकोमोडेशन देते हैं कुछ ट्रैवलिंग सीट देते हैं लोग नहीं जा रहे हैं तो मैंने अभी पिछले एक वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट में मेरे सेंटर कॉलेज का था वो उसमें मैंने 6 साल का काम करके यहाँ पे एग्रीकल्चर में हूँ तो वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस ये है वो अप्रोच करते थे हमारे इस ऑफिस को आते थे मैडम लोगों को बुला के लिए यूथ को बुला के लिए वुमेन को बुला के लिए अवेयरनेस देना Oh, actually, this is a very interesting point, right? See, I actually wanted to, when I started the discussion, I asked you, how can eVidyaloka help you? Venkat actually, without you realizing it, has been turning the question other way around. How can you help? Right? Now, this is a very interesting point, and I want to actually spend the last 5 minutes, and this is a great start, right? So, one idea that I am thinking is if each of our partners would actually nominate somebody who is going to be the local expert in connecting to the external world. Agricultural university institutions who are and there is an ability that this online portal from this the connectivity can help you. But unless there is a physical part, there is a manual part. Physical part, we can create infrastructure, we can use it, subject to schools providing it, but you may need to provide people who can get trained, right? So maybe the discussion now, and we need to go organization by organization, on in all of this that we listed down, if we can go back to the 17 points, right? Repeat these 17 points, we talk about this. We said what is taking, continue doing what we are doing, that's the default, that's the default position. We talk about community communication, which is really what we are talking about here. We are saying we should sustain education beyond what we are doing, 8th, 9th, 10th, आगे बढ़ना चाहिए. We should set up an e-library or some idea from somebody. Online classes for farmers, local occupational training, which is what we are talking about, vocational training. Getting to commercialized products which are produced in one place, we try to commercialize elsewhere. Marketing of products through Facebook at work. Let me just complete and come back to you again. You got something on this point you said? Okay. Promoting awareness among students beyond curriculum, which is about values, moral and environment. Community-driven education. Building scholarship programs. Life skill training to adolescents. Vocational guidance and training. Life sciences. Capability building programs. Plantation was an area that was repeatedly talked about, which is interesting. And getting to build diverse partnerships, engaging with agricultural universities. So there are 17 such ideas we listed down, right? Is there another idea you want to add to that, Shivraj? Sorry? Repeat that. Channels, they are only agricultural video program. I don't think they would do that. Why? That is because Rajinath is not recording here. No, I understand. No, but I think I would rather turn the, I go back to this question. Instead of asking the question why, I want to ask the question how can we do something about it, right? Obviously, why is missing here? Unless you don't know why is it a problem, you can't help it. So I actually want to go back to this. I want to turn the thing in a different discussion, right? Just each of us are representing an organization. Can we right now pledge, right now, what is the one thing that we will do tomorrow morning that helps in any one of these 17 initiatives or anything more you want to add? Let's talk about what we can do concretely and in the process, how can you do it ahead? I want to make the conversation more specific and take it up. We need to actually, it is important. I think we should all take a pledge here, and this is the one thing that we will do tomorrow morning.
So we talked about scholarship. Maybe you should stand up and say, I will actually go and talk to all my people in my community, actually build a scholarship. We talked about getting children educated beyond the class of, see, we can only take it to a point, right? Beyond this, there is going to be a lot of empowerment from the local people. To take it to class 9 and 10, what can you do to actually take your children to class 9 and 10? Even if there is one thing we can do more than what we are doing now, that's still valuable, right? We talked about promoting, commercializing products. We talked about getting, tie-ups. But maybe, madam, you can suggest how can you actually build this ability of your learning on tie-up with agriculture, other people, other partners. I don't know. You, all of you may have, each of you may have an idea. I want you to come here on stage here and say what is the one thing that you believe in your organization you can do. आपके संस्थान से आप क्या कर सकेंगे जो ये 17 आइडियाज में एक को implement कर सके हो, at least one, right? And let's actually see how we can take this forward. Who wants to come first, first? My organization CESR can provide vocational guidance and training in schools if they allow us or outside the school in the community to develop capacities among the people so that they can do by themselves. So what do you do? What are you doing? Okay, we will find first the local resources. What are the resources that are available in those areas, and then identify the vocations that can be implemented with those resources, and contact people and expert person that how can we implement and teach them, and that's why learn some skills and impart on them. And this is something only for the Korea team, or this should be done for other also? I think everyone can plan and do this type of things in their own places. In their own places. That is totally local. This is the local initiative. Yeah, it's totally local initiative. You are saying what we are preaching here today is you will find additional vocational trainers who can bring in the skills for the children or vocational training beyond their school education that will give them a livelihood for them. That is your preaching. Yes, there are NUPA, National University for Educational Planning. They provide vocational guidance and trainings. So if we are so interested, then we can go and take training from them and thus impart later in our locality. NUPA, New Delhi. Yes, they provide guidance in vocational areas. And if we are so interested, then we can contact them and ask them to just give some sessions and seminars, and they will do it. So one thing that we for sure we should do, Venkat, is for the next partner summit, we should actually have a NUPA representative here in the school. Maybe it's very far, we don't need to wait for that to actually activate what he's suggesting. But I guess engaging them would actually be a good idea. You want to say something? So I think the one place that we are actually having here in this open meeting is I will actually come back to you. He's going to come back to us, to this forum, on what is it that which are the occasional trainers in his community that he's identifying who are going to provide the education for his community. I think that's a reasonable commitment that he is making. Okay, thank you. Who's going to come in next? In fact, I love the idea that Vijay is proposing. Sir, this doesn't have to be for all the children. Even if one child, 2 children, 10 children, 15 children supported, that's still good enough, right? Who's next, sir? I want someone to come in here and say what is it that you want to do differently, which has not been done yesterday, and how can we implement it? Rajabhati, what about you?
let's come to solutions. We talk about problems, let's come to solutions. What is the one thing you want to do? अभी जो हमारे eVidyaloka में एक क्लास के बच्चे को हम लोग दे रहे हैं लर्निंग क्लास, उसमें से जो 9 में जाएगा उससे 20 बच्चा को हम आइडेंटिफाई करेंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको हम एक महीना का स्कॉलरशिप देंगे। 20 बच्चे सामाजिक परिवर्तन संस्थान के सारे एनजीओ में बच्चों इसका जो 20 बच्चे को हम लोग 8वां क्लास में से पास आउट होंगे, इसका सबसे टॉप मार्क्स होगा, उसमें जो गरीब युवक कम्युनिटी होंगे उसको हम एक करके 20 बच्चे पास नंबर 2 60 ऐसे एडोलेसेंस गर्ल्स और बॉय होंगे, 30 गर्ल्स और 30 बॉय, जिसको बोर्ड देना नॉन रेसिडेंशियल लाइफ रिसीव कंपनी हम अपने संस्था में ला करके बोर्ड को 4 दिन का उसको ट्रेनिंग देना है। मेरा सपना अवेलेबल है स्पीकर का, हम हमारी तरफ से आप प्रोग्राम करेंगे उसको ऑनलाइन स्पीकर लगाएंगे। हमारे यहाँ चैनल भी है और वो दूसरा दशक जहाँ में सर जयपुर राजस्थान वहाँ भी हम लोग जाकर के वहाँ से हमारे 4 महीना के लाइसेंस का हम उन बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे eVidya कर रहा था, उस बच्चे को हम 20 गर्ल्स और 20 Excellent, very good. This is what I call a real pledge. This is actionable. We will actually accept one thing we will do. Let's take a day. Teachers' Day. Right? On Teachers' Day, we will actually take stock of all the commitments that are being made right now, and we will go back and see how to make progress. Fair, sir? We are right now in May. We have time. June, July, August, September. We'll actually be 3 months. Is a good time frame. We will take stock. Fair enough, sir. Who wants to come next? Yes, sir. सर हमारा महापुर ब्लॉक में 20 गांव का फार्मर है, तो हर एक गांव से 50-60 फार्मर ऐसा 20 गांव का फार्मर 500 लोगों का फार्मर का सिलेक्शन किया है सर, और वो 500 मेंबर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का अभी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है हम, तो इसके लिए हमें नाबार्ड सपोर्ट कर रहा है। तो वो जो कंपनी बनेगा ना सर, तो उस कंपनी में फार्मर के लिए उस इलाके में एक जो बाजार में से भी सफाई करके वहाँ कंपनी का ऑफिस रहेगा, गोडाउन रहेगा, जो फार्मर वहाँ का मेंबर रहेगा उस मेंबर को वहाँ से फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड और यूनिवर्सिटी में एक्सपोजर के लिए भी इसमें प्रोविजन है सर, और ट्रेनिंग के लिए भी एक्सपोर्ट का और ट्रेनिंग रखवाने के लिए प्रोविजन है। तो ऐसा वो उसके लिए नाबार्ड की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए पूरा वो फार्मरों को सपोर्ट कर रहा है। और बच्चे भी कर रहे हैं। स्टार्ट होने के बाद उनका प्लान है सर हमारा, जो अभी हम लास्ट 15 दिन पहले ऋषि सर आने के बाद eVidyaloka का जो डिजिटल स्कूल का प्रोग्राम है उसके बारे में हमने जानकारी दिया। हम उनको यहाँ आपके जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है ट्राइबल की, वहाँ उनका पूरा 100 लोगों का स्कूल के वहाँ पे eVidyaloka डिजिटल स्कूल का जानकारी दिया है, तो वहाँ हमने जो स्कूल को रिसीव किया सर, कनेक्टिविटी वगैरह वहाँ का जो डिजिटल ट्रांसपोर्ट है उसका वेरिफिकेशन किया। तो नेक्स्ट यहाँ से जाने के बाद यदि हमें eVidyaloka ने उनके साथ काम करने का मौका दिया तो हम उस स्कूल में जाके वहाँ के जो हेडमास्टर है, प्रोजेक्ट ऑफिसर है, इसके प्रोग्राम के बारे में अभी जो भी हम उसका ज़्यादा जानकारी देंगे, लेकिन अभी वो जानकारी मिल गई, इसका सब कुछ हम बताएंगे। और सबके साथ
be a life-changing experience, right? तो ये मैं एक और आइडिया आपको देना चाहता हूँ कि जब भी आपको कोई डाउट्स हो या ऐसा सिचुएशन में क्या करना चाहिए करके आपको कुछ भी डाउट्स हो तो ये भी कि लोग से आप जरूर बात करेंगे किसी से आप बात करेंगे और किसी से, लेकिन उसके अलावा आप यहाँ जो पार्टनर्स हैं जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ऐसा सिचुएशन में उनको क्या किया करके उनसे आप बात करें ऑनलाइन बेसिस पे। ये मीटिंग का एक समय पर ये भी बनता है कि आप एक दूसरे को अपने का मौका मिल गया तो आप कैन एक्चुअली गेट टू लर्न कि सर ऐसा सिचुएशन में आप क्या करते हैं ये कैसे, क्योंकि eVidyaloka का कार्य एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम सब मिलके बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना जी सर इसके बारे में जानकारी। थैंक यू। Who wants to come next? जो बताया था लाइफ साइंसेस के बारे में, हमारे पास मटेरियल रेडी है, टीचर्स भी है, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, क्लास 6, 7, 8 के लिए वीडियो पोर्टल बेस्ट बुक जो बना है बेस्ट बुक उसमें हम डिटेल्स दे रहे हैं हिंदी लैंग्वेज के लिए 2 नंबर, तेलुगु के लिए 2 नंबर, तो उसमें क्लिक करने से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और ये क्लास टाइमिंग जो है जो टाइमिंग से है आप एचएम से बात करके Thank you. Before we will wrap up, any other inputs from anybody else before we close for the day? So can I quickly summarize the 3 or 4 takeaways? Just quick summarize from the joint. I think there are 4 takeaways in my understanding. Takeaway number 1, we have identified clearly the one thing that we are all seeing here is the most common theme is how do we use the infrastructure created for using beyond school education. So that's clearly one theme that is come out. The second theme that has come out is how do we sustain education beyond class 8. Maybe we don't have answers for all those questions here, but we really want you to come back and say that we want, these are the 5 children that we want to promote, these are the children we want to educate further. We could actually have mentors to actually get these children. So the second theme is really on how do we get children to study beyond 8. The third is vocational training. We talked about how do we get children to learn vocational training, not just school education, but something which is giving them livelihood. And fourth, we talked about is how do we actually collaborate amongst ourselves and have eVidyaloka beyond the schooling, right? How do we use products to be promoted? How do we actually get to leverage the infrastructure to teach people about local cultivation, agriculture, and so on and so forth? How do we collaborate together? हम लोग साथ में मिलकर कैसे हम लोग collaborate कर सकते हैं? 4 themes, right? 4 themes. Any other suggestions? Can I repeat those 4? You understood first this? So you understood all the 4. What is the first one? So we want children to go beyond class 8, right? We want them to study beyond class 8. That is 1. 2, we want to use the digital infrastructure for doing things beyond education. 2. 3, we want to find how to promote vocational education to the children. And 4, we are trying to find out how we can collaborate amongst ourselves beyond the cause of what we are doing. These are the 4 common themes that will come out of this. We will actually get together and see what we have done about these 4. We get to meet our teachers. Yes, sir. I'll repeat it once again. First one is we want children to go beyond class 8. Correct. Sustained education. Beyond class 8 is first point. We want children to get vocational education, that is class 2, point 2. We want to use the digital infrastructure for beyond education in whatever we can, that is point 3. We want to collaborate amongst ourselves, is point 4. In essence, all the point we discussed is falling amongst any one of these 4 categories. Correct? So we need to now talk about this. I think we are running out of time. We can't get to, we are deliberating. But we want you to come back. It's not a conclusive
not that we have to stop thinking today. We can always apply to other ideas, and we should actually be able to do this more often. Would that be fair? So, really, one round of applause for our wonderful conversation, really. So, we'll sort of a break later. We'll take a small break now. 15 minutes. With this, main thing is completed. We'll take a small break. We'll assemble sharp at 4:30, and we have the final awards and recognition event. So it's time to relax. As we had late lunch, we pushed the tea to 5:30 with little high tea snacks. 5:30 people are starting to leave, so we'll close sharp at 5:30 or maximum 5:45 with the award function, and then subsequent vote of thanks and who wants to say any final say of words we can do. Right? You has not completed the reimbursement claims. Anybody has not yet able to give? Or all have submitted? All have submitted. Okay, fantastic. So that's the last part. Maybe before we close, we introduced 1, 2, 3, 4, all 5 of your class value team, Deepika, right? We have one more person who is joining. When we find who is the person suddenly popped up here in the group, Ashwini Avanti, हमारे तरफ से at least for she is going to join eVidyaloka in the operation. She will be working for Karnataka state, and probably of course will be for others. Ashwini, maybe this will be the only event where we have someone introducing at the end of the event actually, right? I'm really glad. Maybe you also might want to share your experience in Delhi when you presented technology as part of one of the national programs, right? 2 minutes, if you would introduce yourself, we'll make the show complete. And we'll make right after that. Hi, I'm so sorry. Actually, I was supposed to come guys yesterday, and it was pleasurable, like seeing all the team, like different Karnataka, Tamil Nadu, and North parts. I would end up with only a few sentences. I will not make you bored. Actually, yesterday I had been to Delhi to submit my applications. Like I'm developing the technological app for mentally challenged children. So this was my career goal, and I was expecting something. I think like it might be a 10%. Like the government will support and sustain whatever we are doing. But for God praise, like Mr. Narendra Modi, he had given us a green signal to open up all the application for the mentally retarded children, and also he has had a keen idea to develop a training module for education and to reach our programs and each and everything. So, technological applications, it has come up for a mainstream, and it will go from working for within 1 month it comes to the mainstream. So this is what yesterday I was being going with. So probably I'll not miss for the next session where I'll be in touch with you guys. Thank you. So we'll break for 10 minutes. Thank you very much, Ashwini.
Good evening, everyone. We are at the final leg of our National Partner Summit 2016. I hope you all had a very eventful Friday and Saturday. I feel excited to tell about what our last piece is going to be about. It's the awards and the recognition on all the efforts being put up by all of us to ensure that this academic year goes as a very successful one. To present the awards, I would like to invite our chief guests, Mrs. Swapna Ramkumar. She is wife of our trustee, sorry, what is it, board member, Mr. Ramkumar. Our second chief guest who will be presenting the awards is our one and only Executive Director, Mr. Venkat Sriraman. Our third chief guest for today is Mr. Ram Kumar. Please come on stage. Thank you. Our fourth chief guest, Mrs. Deepa, who is wife of our trustee, board member, Mr. Ravi, would be joining us shortly. We would introduce her to you. So here comes the start of our awards and recognition. We have a couple of awards for today. The categories are the Star Class Assistant of the Year, where we have selected from every state one class assistant. And I will be sharing the parameters later on. The second award is for the Star Coordinator of the Year, where we nominated from the different states and we have one winner award. Third is the Partner of the Year, based on the parameters. Best Performing State for this academic year. And impact recognition with 2 children per partner created by the collaboration of the local partner and eVidyaloka. Going on to our first category, the Star Class Assistant of the Year. So the criteria that we used were how involved was the class assistant in the entire academic year, how responsible he was in handling all the situations that come up in the school, his proactiveness in solving any sudden issues coming up or sharing information, the initiatives the class assistant takes to ensure that he or she can do something better than what was originally planned. We had a selection process where we had given them scores, and then among the scores we finalized who scored the topmost and have awarded them. So the winners are from who is the class assistant for Koitola Center. Swapna will be handing out a certificate, citation and the medal, and I would like to call upon Samajik Parivartan Sansthan members to please come on stage to receive the award.
From the third state, the classroom assistant of the year goes to Sumitra from Bengalkatti Center. I would like to call upon four partners to please receive the award on behalf of Sumitra. Please state your names. So from Tamil Nadu, the class assistant of the year goes to Tamil Selvan from Keralamattam Center. I would like to invite to please come on stage and receive the award on behalf of Tamil Selvan. Congratulations. Congratulations to all the class assistants. Please congratulate them on our behalf as well and let us know how they feel once they receive the award in person. So our next award for the day is the Star Coordinator of the Year. The criteria on which each of the coordinators were assessed were the ownership, the people leadership skills, the issue resolution time, and how well the person took on initiatives to do something good in this cluster across all the sectors. So the nominations were given by each of the state coordinators on how well they have interacted with the other coordinator, and there was a ranking done. And the winner for this award for this academic year goes to Divakar Kumar Jha, Samajik Parivartan Sansthan, Jharkhand. I would request Divakar ji to please come on stage and Ram to give the award to Divakar ji. A huge round of applause, please. As the citation reads out, Divakar ji's other Sananam is problem solver. Thank you, Divakar. I read it down. Hardworking, result oriented with minute detailed process. So, hardworking, result oriented, with very minute detailed process, dependable problem solver, many of the adjectives that Divakar Kumar Jha specifies. Acting as a buffer between the remote side and the rural side is very meticulous and aggressive. Our chief guest for the day, Mrs. Deepa Ravi has arrived. I would like to call upon joining the other chief guests on stage. Thank you. Moving on to our next award for the evening, the Partner of the Year. Which is that partner who has fit in all these criteria of showing the program ownership, having a very good rapport with the local bodies, having a very great influence on community, and the financial management aspect. So the nominations were given by the state coordinators and they were reviewed by the management, and we have come upon a final winner for the day for this academic year. And the Partner of the Year award goes to Samajik Parivartan Sansthan, Delhi, Jharkhand. I would request Mr. Umesh ji to please come on stage and receive the award from Mr. Ram.
eVidyaloka appreciates the efforts of STS in ensuring the smooth functioning of activities from macro to micro level. STS has always taken ownership of all the centers in this territory to the very level of detail from the detail. Thank you, sir. The next award for the evening is the State of the Year, Best Performing State of this academic year. The criteria chosen were the class efficiency of all the centers across that state, the teacher effectiveness, the children attendance, and the learning outcome measures. They were based on the data from our dashboard, from all the portal details that we have been seeing yesterday and today, and they were reviewed and selected by eVidyaloka management. I would first like to have Venkat come on the stage so that he is ready to give away the award. My heart is thumping to say the name of the state. The best performing state of this academic year is Karnataka. I would like to call upon Mr. Sripati from Scope, Mr. Vasant from Gateway India, and Deepika, who is our state coordinator, to come on stage and receive the award from Venkat. A huge round of applause for Karnataka people. Congratulations. Thank you, Venkat. If you can give me just 2 minutes to check how they see. Karnataka team, how do you feel? Very happy. eVidyaloka ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3-4 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Award to develop our accuracy in the future. Happen year over year. So the next category for the evening is the impact recognition for the child learning outcome. Before I go more into this with the criteria, I would like to say that the learning outcome of the children has been possible only because of the support of the local partners. The interest that you have taken, the passion that you have taken in delivering these classes in those sectors has ensured that the children improve and they show an outcome in the learning for this academic year. So the criteria we saw by the attendance of the children in the entire academic year, the performance in their term assessments, which is scholastic assessments, and the display of post-scholastic traits, which is their personality improvement. The students were selected from the learning records, the database, which has come only because of your efforts put into these centers. And they were reviewed and selected by the management looking at the data. So we have chosen 2 students from every partner who are the stars for that local partner and can do much more better for the village. So I would like to congratulate each and every partner for getting those students
that they benefit the most out of the program and with the promise that they will continue to do so. So we'll start with the student awards. Naga Priyanka from Malela, who studies in the Tiruguru cluster. I would like to request Chaudhary sir and Nageshwar Rao to please come on stage and Mrs. Deepa to hand over the medal and certificate. And each of these certificates also have a progress report card which you could share with the student and the parents. I am very confident that the parents will be very happy to see that their children are doing so well. Just 1 minute, sir. 1 minute, sir. Yes, so 2 students per part. So the other student is Naga Lakshmi from Konijalla School. She is from 6th standard. The next student for this academic year is Padamati Vijay Lakshmi from Pesar Lanka. However, we do not have the local partners present here today, so we will get that for you. The next student is Naidu Sarita from Juvalerpalam, again from Parivartan. So we would share it with them. The next student is Soni Toko from Bero. She comes from the Ranchi cluster, Sahyog Mitra. They unfortunately couldn't be present for this event this year. We would have it sent to them. The next student is Poonam Kumari from Chatpura, again with Sahyog Mitra Ranchi cluster. The next award goes to Soni Kumari from Chengadasa School under BD cluster in Jharkhand. Divakarji would come on stage to collect the certificate, the student report card, and the medal for Soni Kumari. Just a 8 minute Divakarji, 8 minutes. The next student is Ankit Kumar Verma from Koirikola School, Unity Cluster, Jharkhand. Thank you, Divakarji. The next student of the year is Ayyappan from Top Step. We do not have the local partners present here today, so we would have it sent to the school. Next student is Jyotika, again from Top Step with WWC. Next student is Talayamani from Keradamattam School. UNCS to receive the award on Kalpa. So there is one more student. Sorry, sir. So the screens have been swapped. The next student is Zarina Mary from Satamangalam, which comes under Aid India. The next student is Adi Shakti from Aliyur Center, which comes under Aid India. Again, Sandhya R from Aliyur Center, under Aid India. Thank you, sir. Nivedita from Sanagore, again under Aid India.
Thank you. Please. The next student is Bharti Yamuna Revalla from Bengaluru Center, which comes under Dharwad cluster. I would request Mr. Shripati to come and receive the certificate, the scorecard and the medal on behalf of the student. One minute, sir. The other award goes to Vivekananda Kalappa Revalla, again from Bengaluru Center. Sir, there's another certificate for Bengal Katti. This is for the Kaveri Ganpati Padi. Thank you all. So I request with each and every partner is to have a very nice and a formal event if possible, where the children are recognized for their performance and this being shared with all of them in front of the other students. And please share their stories with us on how they feel after receiving the award on their performance for the last exam. Thank you so much. Thank you. Thank you, Vibha. I would like to request Mr. Deepa to share a message for the children whom these partners represent, to tell others Deepa ma'am is principal of this school and she is here only because this award is going to be given for children. Children are very close to her heart and I would like to request Deepa ma'am to share a few messages to the partner and then they can carry to the children whom they are representing here. Thank you, Venkat and eVidyaloka team for inviting me. It's been an honor and pleasure to be in front of all of you, and my heartfelt thanks to all of you, every one of you who are working for this wonderful cause. You know, the help that you are doing, reaching out children, is it's not a simple act at all. The impact you're creating to the society and the hope that you are instilling in children is immense. All I would like you to go carry, tell my children, we are here. We are here for you. You can bank on us. Any help, any time, you can go, you can support. I think you have done your part to shape the next generation. Thank you so much, and congratulations to all the wonderful children who are a part of the eVidyaloka program. So, thank you very much, Deepa. So with this, we are going to a close. We have 10 to 15 minutes of time. We probably reserve this time before we share our vote of thanks for making this event really, really colorful. It's so very energy. It doesn't sound like end of the event actually, right? There's still a lot of energy left. It says, hope you all had a good time. We'll use the next 15 minutes if any one of you has something to share, say, when we all have to fill the feedback form. आपको कुछ सही बताना है, कुछ कहना है, कुछ useful any points you have. This is the time that you can come on stage and share that. You can tell your story in the same language. In the event, what of time so that we and points in the this is the time that you can come and share. And you are from Tamil Nadu. Now you see most like Society for Women since we are working 1992. We have so many activities. We are done so many activities to help out so many
agencies, so many supports of local partners we have done. But before that, you are coming, I will know about eVidyaloka 1.5 years. I will just search it in Google, any innovative idea in ICT, I get a eVidyaloka website. Just I saw. After I signed the eVidyaloka, then after one day we will be in office, I get the lunch also. I was that day very happy because what is provided is not only education, it's ஒரு கல்வி கொடுக்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாணவனுக்கு வெறுமனே பாடப்புத்தகத்தில் இருக்கிறத மட்டும் நம்ம கொடுக்காம அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்றது கல்வி கொடுத்தாதான் அவங்களுடைய சஸ்டைனபிலிட்டியா இருக்கும், ஆன்லைன் சஸ்டைனபிலிட்டியா இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து eVidyaloka பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் அவங்க பண்ணக்கூடிய நம்ம eVidyaloka பண்ணக்கூடிய கரிக்குலம் ஃபாலோ பண்ணிய கரிக்குலம் நான் இது வரைக்கும் எங்கேயும் பார்த்தது கிடையாது. ஈவன் ஒரு மாணவன் தெரிஞ்சுக்கணும் அவனுடைய மாணவனுடைய ஆட்டிடியூட்ஸ் என்ன when compared to other ஒவ்வொரு மாணவனோட கம்பேர் பண்றது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பேரண்ட்ஸ்க்கு ஈவன் ஒரு கிராமத்துல இருக்கிற பேரண்ட்ஸ்க்கு நம்மளே பள்ளிக்கு போறவங்களா போயா என்ன படிக்கிறாங்க என்னன்றதே ஒரு கேள்விக்குறிதான். ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து அவங்க கிராமத்துல இருக்கிற பெற்றோர்கள் வந்து போய் பள்ளியில போக மாட்டாங்க. ஆனா இன்னைக்கு ஒரு வெப்சைட்ல போயிட்டு அந்த டேட்டாஸ் வந்து நம்ம எடுத்து கொடுக்கலாம். அதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் தான் eVidyaloka வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நிறைய அவார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. இது வந்து ஒரு நேஷனல் அவார்ட்ஸ். இது வந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும். நாளைக்கு நாங்கள் அவார்டு வாங்குறீங்க, நான் எடுக்கக்கூடிய செக்டர்ல நிறைய பிள்ளைங்களை வாங்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆர்வத்தை உருவாக்கி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஒரு வெறுமையா ஒரு வெப்சைட்டை பார்த்து இந்த விஷயத்தை விட நிறைய விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டேன். லைவா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கொடுத்தது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. நான் எதிர்பார்த்ததை விட நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன். என்னுடைய டெக்னாலஜியை அந்த கற்றுக்கணும். நான் இந்த 2 நாள் வந்து இன்னும் நிறைய நாள் தான் நிறைய டெக்னாலஜி கற்றுக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Summary of it is, I think so Yuvraj had to say that he was thinking it is technology driven when he walked into the program. But I think when he walks up, it's saying it is far beyond just technology and just learning. He is talking so much about the skills, the education, the sustainability of the program, and he is aspiring to be on the receiving end for his children coming next year. Thank you for sharing your thoughts. Please, yeah. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂತ. ನಾನು ನೇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೀದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. 2014 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದೇನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, BRC ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ BO ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಈ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. $2014 में इनको जो एक टीवी के क्लास में इंटरनेट के द्वारा सिखाने के लिए बोला गया था, उनको अजीब से लगा कि एक टीवी के द्वारा कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्या हम लोग पढ़ा पाएंगे या नहीं। और धीरे धीरे 1 महीने से 2 महीने चला तो ऐसा लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और पढ़ा पाएंगे। और ये जो क्लास है eVidyaloka
इस सिस्टम को देख के ये जो गवर्नमेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनको भी ये बहुत अच्छा लगा और ज़्यादा डिमांड आने लगा कि हमारे क्लस्टर में भी कीजिए, यहाँ हमारे स्कूल में कीजिए, ऐसा बहुत डिमांड मल्लिकार्जुन के क्लस्टर में मिला था। और साथ में इनके जो वॉलंटियर्स काम करते हैं इनको ये टेक्नोलॉजी का उतना परफेक्ट नॉलेज नहीं था। आज ये 2 दिन के वर्कशॉप में ये भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का एक नॉलेज पा चुके हैं। अभी जाके जहाँ पे इनके वॉलंटियर्स को जहाँ टेक्नोलॉजी का नॉलेज का लैब था वहाँ पे, और ये भी जाके ज़्यादा उनको सिखाएंगे। आज के इस अवार्ड समारोह में मुख्य अतिथि इस भक्ति वर्कशॉप में उपस्थित हमारे इंडिया के एनजीओ पार्टनर और हमारे eVidyaloka के दवाल टीम जो कड़ी मेहनत के बाद पूरा जो हम क्षेत्र में काम करते हैं उसका परिणाम दिखता है और ये आपका मेहनत है। हम लोगों का जो दिशा निर्देश होता है उसके अनुसार हम काम करते हैं। पहली बात है कि इस अवार्ड से हम इतने खुश होते हैं। एक बुजुर्ग आदमी हमारे अंदर इतनी लालसा है, हम अवार्ड पाने के लिए सोचते हैं कि मेरा नाम तो अब आएगा और ये मन में लगता है कि किसका नाम आएगा, हम उत्सुक होते हैं। साथ में मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ इस तरह का फंक्शन हम अपने सेंटर में करें, इस तरह का कार्यक्रम हम अपने बच्चों के लिए करें तो वो एजुकेशन के लिए लड़ाई होगा, प्रोत्साहित होगा और वो पढ़ने के लिए आएगा। जो आज 2 बच्चे का नाम आ रहा है कि 100% को उपस्थित हो रहा है, सभी बच्चे आएंगे क्योंकि उनके मन में रहेगा कि मुझे भी कुछ अवार्ड मिलेगा। तो ये हम चाहेंगे कि अभी जो आपने अवार्ड मुझे दिया है ये हमारे बच्चों के लिए है, हमारा कर्म टीम हमारे जो वहाँ वॉलंटियर्स हैं टीचर हैं उसका है। हम उसके साथ जाकर के शेयर करें, उसको हम बताएंगे कि आपके बदौलत में अवार्ड मिला गया और इस बच्चे के लिए हमें अवार्ड मिला है। उस स्कूल में कार्यक्रम करेंगे और वहाँ लोगों को आकर के कम्युनिटी के साथ एसएससी के साथ हम उसको इस अवार्ड को जमा करते हैं। हम बहुत खुश हैं। मैं एक कमिटमेंट करता हूँ कि हमारी आदत है 1993 से काम कर रहे हैं। हम एक युवा फैमिली से आगे आए हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं। इसमें बोल सकते हैं कि मेरे पिताजी ब्राह्मण पेशा से मुझे पढ़ा करके आगे थे। ईमानदारी से काम करना सीखा हूँ, करते रहूंगा और इस तरह से अवार्ड लेते रहूंगा। जय हिंद। Briefly translate, saying basically when the name comes up, everybody is curious, is my name coming there? For once, it is not for our own self, but it is for the children. I think he also believes that the award has received, he will go and share with the teachers who are connected on the children and tell them of theirs. And also in the school who bring the SMC and have an assembly of local community and showcase the children that if they are given the right opportunity, how they are really performing there. And he also attributes this strength of this working to his parents, how he was educated and told to work selflessly and honestly, and he will continue to do that till his last. Thank you. That's the message from me. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். ராஜபாண்டி தமிழ்நாடு. முக்கியமா ஒரு 2 விஷயம் சொன்னாக்க eVidyaloka ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். என்னன்னாக்க தமிழ்நாடு மட்டும் இல்ல பல மொழிகள் பேசக்கூடிய ஒரு ஒவ்வொரு மாநிலமா தேர்ந்தெடுத்து அங்க இன்டீரியர்ல இருக்க மாணவர்களுக்கு அந்த அவங்க தாய்மொழியில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். ஏன்னா இந்தியா வந்து தமிழே சொல்லிக் கொடுக்க 11 மாவட்டங்கள்ல கஷ்டப்பட்டு இருக்கு, இன்னும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கு. அதனால வந்து நீங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 மாநிலங்கள் கிட்ட கடந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. 7 மாநில மொழிகளையும் சொல்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்கான ஒரு கோஆர்டினேட்டர், ஸ்டேட்ல இருந்து ஒரு கோஆர்டினேட்டர், அந்த ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கிறது, அவங்க குவாலிட்டியா இருக்கிறது. ஸோ அது வந்து என்ஜிஓ ஃபீல்ட்ல வந்து எவ்வளவு கஷ்டங்கிறது நான் ரொம்ப அனுபவப்பட்ட ஒரு விஷயம். அதுக்காக eVidyaloka ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்றேன்.
வாழ்த்துக்கள். ரெண்டாவது வந்து என்னன்னாக்கா ஒரு அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட்ல வந்து எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு அந்த காய்கறி நான் கத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் ரெடி பண்றதுல இருந்து நேத்தா கிளியர் பண்ணாங்க ஃபுல்லா எப்படி இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ஒரே பேட்டர்ன் போகுமா. ஏன்னா இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கல வந்து நாங்க சும்மா ஸ்கூல்ல வந்து ஓபன் பண்ணி சுவிட்சை போட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்றதா இருக்கு. ஸோ அதிகமா மண்டே உடச்சு வேலை உங்களுக்கு. ஸோ இதே வந்து ரொம்ப நல்லா பண்றீங்க, தொடர்ந்து இந்த வேலைகளை சிறப்பாக பண்ணுங்க. இந்திய வளர்ச்சிக்கும் eVidyaloka ஒர்க் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்குது. அதே மாதிரி ஆஃப்டர் ஸ்கூல் லேர்னிங் சென்டர் பண்ணணுங்கிற விருப்பம் வந்து ஸோ கால் டு eVidya. ஸோ eVidya சப்போர்ட் பண்ணோம் ஆஃப்டர் ஸ்கூல் லேர்னிங் சென்டருக்கு. எல்லா குழந்தைகளும் வாழ்க்கையில எல்லா திறன்களையும் பெற்று முன்னேறணும். அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Radhavani had 2 points to share. One was that he himself runs an NGO for quite long time, salutes to what eVidya does. Radhavani is humble to kind of share for a translation Chinese context. eVidya works in 700 villages in Tamil Nadu. So his point was that we care about doing it in 11 districts in Tamil Nadu to teach it out. He is amazed that, or he is humbled by saying that eVidyaloka is identifying multiple such languages now in 4 states, about 3 states in 7 states, and trying to find. He was able to empathize what difficulty is involved in making reach to those remote corners, not just in one state but in multiple states. Second point of him was with respect to how assessment is done, especially remotely. eVidya is experts in doing the assessments and doing for 10-15 years. He is able to see through or appreciating the complexities involved in consistently collecting the assessments from teachers in multiple places and making it available. He is also humble enough to tell that I got time for switch on the TV, switch off the TV. And then but there is so much of other complexities which are doing. So he is appreciating that as well. So I just want to add my reaction to the dialogue. That's how we cheat people and come on board. Thank you. Yes. Chaudhary. We have 12 centers now. We are all happy. सभी लोग खुश हैं. मतलब स्कूल टीचर्स, स्टूडेंट्स और लोकल जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं ना, सभी लोग खुश हैं. हमारा एमईओ जब भी हम जाते हैं कोई स्कूल का नाम लेके जाते हैं तुरंत परमिशन दे देते हैं. कुछ एम्प्लॉई के कुछ लिखना है वो भी करके दे देते हैं. अभी क्या है समस्या आ गया कि एमईओ मैं जब भी जाता हूँ एमईओ पूछते हैं अरे बहुत स्कूल्स है अभी उनको भी सेवा कीजिए पड़ता है. तो आई रिक्वेस्ट eVidyaloka management to consider this. We are hoping for some more schools in the next coming session. Thank you very much, Chaudhary sir. It's going to be that was from anybody else? Yeah. Last few thoughts before. Yeah. On that video. So thanks a lot. We don't normally try to plan for the year. It's on. We don't try to, or rather, it's natural expression of people who have participated in Kama and expressed. So, no manipulation saying that I will come and or no incineration. The natural expression of our work. We believe in being genuine. जो भी कर सकते हैं, दिल से करते हैं. We try to do our best. There's so much to learn from each one of us. It is so nice to feel such a happy family here. Today,
in the really integrated India. So to make this event happen, I mean, really delighted. I would like to express my share of gratitude and thanks. And as I keep saying, this is purely on behalf of the children, for which all of us are serving and working. And both eVidyaloka trust and your trust exist today is for that purpose, not for the technical benefits. With that, I would like to express the gratitude for having a really wonderful and meaningful event. I would like to first of all at the outset thank each and every partner, organizations, members, representatives. I know it's not easy. We also had just 3 to 4 weeks of time, plan, and still making it here from across like Maharashtra, Jharkhand, West Bengal, to down south to Nilgiris to Dharwad to all corners of the country. And made it to this. We really thank you very much for finding value in this program, first of all. That's what has brought to me. Some say things can value that. See, I hope it is lived up to your expectations. Is valuable. So thank you very much for making it here. I also would like to thank the eVidyaloka delivery team, operations team for putting together really a workshop. Again, as you know, I always go back to them a few hours or 2 days back. The contents, 2 hours back. One round of applause to the eVidyaloka. Every one of us here is part of a family. This event, I personally can feel that the family is expanded to each one of you partner organizations. Very, very happy to do that. Thank you, the delivery team. We also have an vibrant student interns team. They just joined on day 1 and then 2 of them are working. They are thinking, okay, what am I doing with my project? Normally, I make a project, put a report, and go back to my college. And then suddenly they realize that it's going to be actually good use and reach out to people. Thank you for the interns from XLI for adding 2 new assets to eVidyaloka and for the implemented in the program here. And more interestingly, the 3 new interns from XLI just came 3 days back. And they're sounding as if they have been for 3 months. Right? For pulling together the awards and conferring here, and we need to be certainly make it happen. While the core contributors for this program, this was the last time I remember I had to keep running around for many evenings. And I was telling Ravi yesterday that I don't feel the pressure at all. I was kind of relaxed. Looks like it's enough that it was peaceful and going back. And it is not possible without a structured support team around this thing. Right? I remember still last day when I initially 1 full day I should have developed so much of code. Today I saw him 2 full days sitting, enjoying what is going on. Thank you, Brady, for taking care of the qualifying measures. Thanks to Anya for taking care of the logistics and and of course, we will have official photographer, Rishi, not just beyond photographer, but also taking care of the logistics from the place of stay to here. While we have contributed to this, also of course external logistics. Thanks to our other board member, Rishi, for providing the stay support and ground for extending the transport logistics. And last but not least, when the labor is coming in, they are wondering actually this is this place. I thought NGO would be some in a hut room or in some kind of things. They come in, they really enjoy the positive atmosphere here and the venue. Thank you very much for Mr. Ravichandran and for extending this space, providing a warm welcome for us, making this event happen, and raising the bar of social organizations. I keep telling you, many forums that I go, NGO कुछ नहीं किया तो ठीक है चलता है यार मेरे पास रिसोर्स नहीं है बेचारा नहीं किया right? There's always a sense of mediocrity right when it comes to results right and we believe that when we are committing to our beneficiary they deserve the best right with whatever resource that is available and I
seen when you have the right intention and aspirations, people come around, provide the resources, support without even being asked for some time. Imagine, Ravi not only gave the place to do it, he made sure that he came and kept the mind speaker system available here, right? So thank you very much, Deepa and Ravi, for making this very nice. Overall, it's been a wonderful day. Hope you all had a fulfilling days. I wish all of you a safe journey back to your villages, and we look forward to visiting you and your children down the line. I also would like to thank few people who are not in the scene here, but still went out of the way. One watchman of this building, Mr. Dimarao, and the 7th grade guy. She made sure that when I am leaving all the sir, I will come at 7:30 in the morning and I will make sure it is clean, right? Understood it. And of course, the driver of the car, the song has always been through where we forget the trophies are left in the shop, still didn't bother to very collecting it. So I think what I really enjoy is people are not doing it for the sake of favor. They relate that they're doing it for the children, right? I think maintaining that spirit gives immense joy, and we all it's all within that bliss. And in that note, I would like to extend a big grand thank you, and we will close it with our national anthem. May I request the board to clear out the place and also have our partners occupy this space on the line, and I request the eVidyaloka team to form lines in back. Let's finish the anthem and then we'll Sorry, all below. We also had two invisible people actually who followed through the entire session. There's one Sarvari, coordinator from West Bengal. She's actually doing, and Remy Jose from Batinda, who are part of the eVidyaloka. He's a West Bengal.